So I'll show you some toppers copies and I'll also show you some of your copies. Okay. And through that we'll try to understand key the different ways of writing good answers. Answer writing overall. देखिए. So basically meanwhile तुम्हारा जहाँ भी डाउट अच्छे पिलाने भाभी थी वो and से टाइम पे सब मतलब क्वेश्चन पचारियो जो टाइम पे डिस्कस होगा and we can take it up. Okay. Answer writing skill overall we'll discuss. So इनिशियली ओवरऑल सोशियोलॉजी रो आंसर राइटिंग ऊपर किछि किछि मु पॉइंट्स कहूची तापर जहाँ भी तुम्हारा डाउट हो से रिलेटेड यू कैन आस्क मी and we will discuss about these things. Then I will show you a few toppers copies as well as some of your copies and we will try to understand key what are the things, good things or good points that are working and which things should be avoided. Okay. So sociology रो आंसर रो मन रखो देखो बहुत सारा तो पॉइंट अछि in general. I'm giving you a few sociology specific ideas. In general GS answer writing रो जहाँ भी स्किल्स अच्छी ताऊपरे मु बहुत सारा वीडियोस भी बनेइछि ताऊपरे तमे देखि परियो सेटा सब जो ओसीएस प्रेप चैनल रे अछि ओसीएस प्रेप विथ सौरभ दास एंड टीम सेते भी देखि परियो ओवरऑल जानि थियो फॉर एग्जांपल देखो बेसिक जिंस कतडा कहूची जीएस आंसर राइटिंग स्किल लो बेसिक कोन ऑब्वियसली फर्स्ट इज की इंट्रो बॉडी कंक्लूजन भयो प्लीज डू नॉट राइट these words as heading तो एटा को हेडिंग भाबे रे दबो नाही we are only using it to understand how your answer should be structured introductory line गोटे 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 और दुटा लाइन लिखियो 10 मार्कर जदी थिबो ताल तो गोटे लाइन मिनिमम लिखियो कंक्लूजन भी गोटे लाइन लिखियो ओके आउ जदी बेसी लॉन्ग क्वेश्चन थिबो ताले दुई तीनटा सेंटेंस लिखि परियो ताठो बेसी लंबा करबो नाही किछि पिला कोन करंती कंक्लूजन ही लेखंती नाही तो abruptly बॉडी एंड है कि गोटे एंड हो जाए जेमति कि बॉडी रे सपोज माने पॉइंट वाइज लिखछन 1 2 3 4 एंड द फिफ्थ पॉइंट थिबो सॉरी so please don't write such kind of things please write at least one line conclusion जदि किछि आसुई नाही ना एबे देखो यार बेसिक आइडिया कोन कोन कंक्लूजन हम लिखि पारि इंट्रोडक्शन ने सबडो सेफेस्ट जिंस की you can start with some sort of definition you can start with some type of context you can माने करंट अफेयर्स फॉर एग्जांपल किछि आसला किछि रिपोर्ट रो किछि डेटा थ्रू रे लिखि पारि तापरे किछि भी वे रे तुम डिफाइन कर पारि माने स्टार्ट कर पारि सेकंड हला बॉडी बॉडी रे तो जहां तुम क्वेश्चन पचराई दियो ताकू तुम आंसर कलो कंक्लूजन ने पिलाने फसी आंती आइडिया आसे नहीं माइंड कि कंक्लूजन में कौन लिखी सिंपलेस्ट थिंग इज कि यू कैन ईदर समराइज योर एंटायर आंसर गोटे लाइन में समराइज कर परियो बट ए बेटर वे टू राइट अबाउट एप्लीकेशंस कि सही जिनसर एप्लीकेशंस कौन you can also write about is pros and positive or negative thing in a single or two sentences if you can summarize the positive or negative जदि एटा ही तमरो बॉडी रे थिला कि तुम क्रिटिकली इवैल्यूएट और एग्जामिन ताल तो एठी आउ लिखिया दरकार नहीं बट फाइनली यू कैन आल्सो राइट ए सॉर्ट ऑफ वे फॉरवर्ड भी लिखि परियो कि फ्यूचर रे हमें आउ कोन कर परियो या विषय सो दीज आर सम ways in which you can conclude your statement okay sorry your answer so এটা তো জিএস आंसर राइटिंग स्किल ले भी जिनस हम सब देखि तो जीएस आंसर राइटिंग स्किल लो भी सिमिलर जिनस हमें जे कोनोसी ऑप्शनल ले सेम आइडियाज वी कैन यूज इट बेसिक आइडिया विल रिमेन सेम सोशियोलॉजी रे भी जहां आंसर लिखियो इंट्रो बॉडी कंक्लूजन दबो सेमितिया लेट्स से कि प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन some among you have some problem with presentation माने कोन देखो या भीतर बहुत सारा पॉइंट आसो हैंड राइटिंग गोटे पॉइंट तो एटा तो चलो बेसी किछि कहया दरकार नहीं बेटर हैंड राइटिंग रखियो मोस्ट इंपोर्टेंटली नीट एंड क्लीन सबले रहो सबले एमतिया कट मार्क किछि गोटे लिखि कि ताको एमति एमति काटिया एटा को अवॉइड करो हला किछि पिला मु देखुछि से माने लिखु छन सपोज तुम गोटे गोटे भूल लिखि देलो एमतिया लिखि देलो सान कोन करे एमति एमति करे डोंट डू दिस you wrote something wrong just put a single mark then you write again so एमि एई भला जिंस करियो ना एई भला जिंस कले कॉपी नीट एंड क्लीन देखा जिवो ना नेक्स्ट इज स्पेसिंग whenever you are writing for example देखो spacing and alignment in general we can talk about this spacing and alignment कौन जेमति कि सपोज आंसर तुमरो केमितिया देखा जिवा उचित देखो if this is your copy ना if this is your copy
मोर एमती सब 11 वाला दुईटा आसो ये लिखार अच्छे ये सपोज क्वेश्चन टा अच्छी बाकी ब्लांक स्पेस तुमको लिखार अच्छे स्पेसिंग है जमी तुम ये क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कल ये इंट्रोडक्शन दुईटा लाइन इंट्रो लिखिदेल ओके तापर बॉडी पार्टा ये किसी गोटे हेडिंग गोटे देल हेडिंग देला टिके छाड़ी एमती किसी लिखिए सपोज गोटे सब हेडिंग इथे आस सब हेडिंग अंडर रे किसी सब पॉइंट्स अच्छी सब पॉइंट गुड़ा एमती लिखिए पुणी आउटे नेक्स्ट हेडिंग आसला पुणी हेडिंग ये स्टार्ट कल फाइनली कंक्लूजन अगेन दिस इज द कंक्लूजन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्पेसिंग स्पेसिंग का माने है कि एमती लिखो जमी तुम आंसर टा स्ट्रक्चर टा क्लीयरली विजिबल थी तुम आंसर टा देखले जना पड़ी कि ओके दिस इज वन पार्ट दिस इज अनदर पार्ट पार्ट टू अंडर रे इटा सब पार्ट दीज आर द सब पार्ट्स राइट एंड फाइनली दिस इज पार्ट 3 एंड फाइनली दिस इज कंक्लूजन एटा क्लीयरली देखा दिया कथा किसी पिला कौन करती स्टार्टिंग रू एंड पर्यंत सब सेम पूरा सब सामान थी इंट्रो भी ये लिखाई थी बॉडी भी किसी जना पड़ोनी कौट स्टार्ट होट एंड हो जना पड़ोनी सो तुम भाव कि कंटेंट तो ऊपर सब जिन डिपेंड करे कंटेंट ऊपर सब डिपेंड करे ना प्रेजेंटेशन आल्सो मैटर्स ये भाया जब आंसर लिखो एग्जामिनर विल गेट इरिटेटेड इवन इफ यू हैव रिटन गुड कंटेंट एग्जामिनर विल सबकॉन्शियसली गिव यू लेस मार्क्स बिकॉज़ ताको लागे कौन लिखछि यार एप्लाई दिस इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिंग सेवाला स्पेसिंग रो मीनिंग भी कि कौन कि ईच एंड एवरी लाइन पर सेकंड लाइन भितर केते गैप हो किछि पिला कौन पूरा भिडी भिडी इमति कर लिखथिले तडा देखियो भल लाइन टिके टिके स्पेस रखियो एंता गोटे पैराग्राफ एटा हला ता नेक्स्ट पैराग्राफ एमति हवा उचित सो एठी गोटे पैराग्राफ सरला पर इमीडिएटली एठू तुम स्टार्ट कर दबो यदि एटा जणा पडियोनी कि गोटे पैराग्राफ एंड हिची आ गोटे स्टार्ट हिची ओके दिस इज अबाउट स्पेसिंग अलाइनमेंट कौन अलाइनमेंट हला एटा सपोज दिस इज योर कॉपी ओके एतिकी जगह तुमको लिखार अच्छे किसी पिला कौन करती एमती लिखा स्टार्ट करेंगे और किसी पिला कौन हम एमती स्टार्टिंग प्रथम फर्स्ट सेंटेंस एमती आसो धीरे धीरे एमती हवा स्टार्ट कर हुए कि नहीं एंड रे पहुंचला बेलू गोटे पूरा एमती तेढ़ा हो तो सेमिया प्लीज करियो नाही एबेठारु तुम पाखरे एनफ टाइम अछि मेंस पूर्व यू हैव एनफ टाइम टू प्रैक्टिस एंड राइट दिस तो प्रेजेंटेशन ए जो स्पेसिंग एंड अलाइनमेंट रो बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड is not even toppers copy रे although किछि बहुत टॉपर्स अछन जे भलो वे लिखि जंती बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड इज जस्ट गो थ्रू एनी टेक्स्ट बुक एबे टेक्स्ट बुक रे जाई कि देखो केमितिया लिखा अछि टेक्स्ट बुक रे सबले देखियो फर्स्ट एमितिया गोटे पैराग्राफ थिबो तापर एठी गोटे हेडिंग थिबो ता अंडर रे जहा सब पॉइंट थिबो से 8 टू एतिकी रेंज भितर थिबो ता अंडर रे आउ किछि पॉइंट्स असले से एमति एमति लिखा हिथिबो तापर पुनी सपोज आउ गोटे टॉपिक आसला एमतिया लिखा हो ए बडा थाई कि नहीं टेक्स्ट बुक रे देखि जे कि नहीं केमतिया लिखा हिता अलाइनमेंट Again, sir. so learn from the textbooks so this is about mostly about presentation yes our presentation our kichi part भी अछि जेमति कि highlighting very important किछि पिला माने मैक्सिमम पिला मु देखुछि एबे ठीक अछि हाइलाइट करूछन्ती किछि पिला माने कोन करन्ती कीवर्ड्स को हाइलाइट करन्ती नहीं प्लीज हाइलाइट द कीवर्ड्स हाइलाइट ओनली द कीवर्ड्स प्लीज डू नॉट हाइलाइट द एंटायर सेंटेंस को हाइलाइट कले जणा पडियो नहीं कि कोडा इंपोर्टेंट कोडा अनइंपोर्टेंट सो कीवर्ड्स को बस हाइलाइट करो हाइलाइट रो मेन पर्पस हला कि हम एग्जामिनर काम को इजी कर दो एग्जामिनर को जिते इजी काम कर दो से खुशी एकदम मार दो एग्जामिनर को तुम बाध्य करियो कि से मोर ईच एंड एवरी सेंटेंस पढू इरिटेट हो एग्जामिनर दबो ना इवन इफ यू हैव रिटन गुड आंसर यू स्टिल you will get only average marks okay कीवर्ड को हाइलाइट कर देले एग्जामिनर कोन बहुत जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट पढी दे खुशी हो सब कीवर्ड्स मेंशन अछि इट इज आल्सो गुड फॉर यू इन द सेंस कि तुम कीवर्ड को हाइलाइट जदी कर दो ताले तुमको सेही टॉपिक ऊपर एग्जॉस्टिवली बहुत सारा जिंस लिखा दरकार नाही कीवर्ड हाइलाइट करके तुम बस कॉपी फिलअप छाड़ी छाड़ी कॉपी फिलअप कर दबो examiner will be happy because keywords अच्छे माने examiner knows कि you understand the topic because without understanding you can never write the keywords okay therefore keywords अच्छे माने दादा मान कोन तुम काम भी सहज हेगा तुम सब जिंस डिटेल एक्सप्लेन करिया दरकार नहीं now next point is that highlight केमितिया करिया किछि पिला कोन करछन्ती किछि बॉक्स कर दियन ठीक अछि बॉक्स करो बट को जिंस को बॉक्स करिया कोडा बॉक्स करिया नहीं तो हेडिंग किछि दउछ हेडिंग को बॉक्स करियाटा बेटर this is your heading you wrote it then finally किछि पॉइंट लिखला each and every point under जहां लिखछ ताको तारो किछि कीवर्ड को हाइलाइट कर दे ओके तो कीवर्ड गुडा को each and every को जदि हाइलाइट करिया बसे तो टाइम वेस्ट हो बस एंड सेकंड कथा कि ए वाला हाइलाइट यूजुअली हुए नाही को टेक्स्ट बुक रे भी इंडिया हाइलाइट हुए नाही
सो हेडिंग को सब बॉक्स करियो कीवर्ड को अंडरलाइन करा हो जहाँ भी लिखते हो तो तले केवल गार टाणी सो दिस इज अबाउट normal your presentation and intro body complete structuring next let's try to understand structuring केमते करी GS रे usually केमते structuring हुए I had given one idea yes anyone wants to ask some तुम voice कटी कटी आसुची तुम voice clear आसु नहीं hello can you say it again कौन question पचार voice clear आसु नहीं हाँ को हेलो हाँ को सर हाँ कुह सर सेही लाइन टा टिके रिपीट करंतु माने सुबिलानी तो को लाइन कीवर्ड्स को हाईलाइट करबा पे कहला कोन जो पहले से लाइन टा टिके आउट रिपीट करंतु ओके से मु जो कहली कि कीवर्ड को ना तुम्हें जहाँ पॉइंट रे ईच एंड एवरी पॉइंट रे बॉडी पार्ट और इंट्रो कंक्लूजन में जहाँ सेंटेंस लिखित सेही सेंटेंस रो कीवर्ड को केवल हाईलाइट कोन करिया ताको अंडरलाइन करिया अछि हेडिंग जहाँ दबो ताको बॉक्स कर परियो माने एमती देखो एडवांटेजेस ऑफ लिकर स्किन if this is your heading you can box like this तापर या अंडर पॉइंट 1 2 3 लिख लो सपोज इजी टू कंस्ट्रक्ट easy under in the underline करियो don't box these things okay construct को बंदिया box करो नहीं just underline किंतु heading को box करके this is a better way to do it sociology रे कोन हबो sociological specifically sociology आंसर एतले देखियो सेतले रिसर्चर रो नाम लिख परियो रिसर्चर रो नाम जेतले लिखुचो सेतले just write it under bracket for example sociology is the study of social facts then write in bracket Durkheim. This also you can underline but please don't write like this कि Durkheim एटा कहिसंती बोली ताको बॉक्स कर दो एटा यूजुअली स्टैंडर्ड मेथड न एबळा लिखा जाय नहीं तो सोशियोलॉजी इज स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट ब्रैकेट रिसर्चर नाम लिखे दो ब्रैकेट लिखे नॉल नॉर्मल वे रे एमते लिख परियो कि Durkheim said that or as per Durkheim sociology is the study of social fact तो एथरे केवल अंडरलाइन कर परियो so this is also one thing next is structuring structuring आमे केमता करियो जीएस रे सब मेथड आमे यूज करछु पेस्टल मेथड से सब मोर बहुत सारा वीडियो अछि देखि दबो ओके प्रोसेस प्रेपुत सौरभ दास से चैनल दारे भी अछि सो पेस्टल मेथड अछि सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रक्चरिंग अछि जेमते कि इकोनॉमी टाइप रो आंसर रे आमे केमते प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर टर्शियरी सेक्टर ई वे रे भी आमे स्ट्रक्चर कर परियो हम आंसर सोशियोलॉजी रे केमते स्ट्रक्चर करी इट डिपेंड्स एंटायरली ऑन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन ऊपर वो डिपेंड करी सोशियोलॉजी रा आंसर केमते for example let's say कि question is कि is sociology a science एथरु जाना पड़ची तुम कोन लिखियार अछि फर्स्ट सोशियोलॉजी रो कोन गोटे इंट्रोडक्शन लिखि दो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंस ओके देन नेक्स्ट लिखियो कि yes sociology is a science कहि कि किछ गोटे आर्गुमेंट्स इन फेवर और दैट इज आर्गुमेंट्स इन फेवर किए कहचंती एटा साइंस के देन लिखियो कि नो दैट इज आर्गुमेंट्स अगेंस्ट किए कहचंती कि सोशियोलॉजी इज नॉट अ साइंस देन फाइनली तुम्हारा निष्कर्ष माने तुम्हारा तो नुह फाइनली निष्कर्ष कौन बाहर और द कंसेंसस कौन अछि या ए टॉपिक पे तो फाइनली तुम गोटे लिखो एंड देन राइट ए वन सिंगल लाइन कंक्लूजन so this will be the structure for this kind of question is sociology is science or not okay so it entirely depends on your structuring will depend on the demand of the question suppose your question is about critically evaluate something let's say critically evaluate utility or critically evaluate content analysis बेसिकली तुम कौन करियार अछि कंटेंट एनालिसिस फर्स्ट इंट्रोडक्शन लिखि दो कि कंटेंट एनालिसिस कौन तापर लिखियो कि कंटेंट एनालिसिस रो यूजेस कौन अछि दो तीन लाइन लिख करो और यूजेस भी न लिखो डायरेक्ट लिखो also both words advantages some points disadvantages some points okay although let me tell you something critically evaluate रो माने न कि हमर पिलांगर माइंड अछि कि critically evaluate माने advantage disadvantage or advantages and drawbacks
क्रिटिकली इवैल्यूएटर माने सेया न, बट कथा होची कि एते टाइम हम पाखरे नाही कि एक्चुअली क्रिटिकली इवैल्यूएट करके बहुत सारा जिंस हम लिख पाए हम पाखरे जते टाइम अछि स्पेसिफिकली इन सिविल सर्विस एग्जाम यू ओनली हैव टाइम फॉर टू राइट दीस थिंग्स एडवांटेज डिसएडवांटेज किछि पॉइंट लिखी फाइनली तुमर ओटा कंक्लूजन लिख पाए। ओके, सो एई क्वेश्चन त माने आंसर एई भले हला क्रिटिकली इवैल्यूएट सोशियोलॉजी रो जो टाइप रो क्वेश्चन दिया है सेई टाइप रो अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर भी सेई भले करियो। तो यही सब आइडिया केमती हम जिते तुम्हें आंसर लिखियो सेते आइडिया हम। सो आंसर राइटिंग स्किल यू विल डेवलप विथ टाइम आल्सो जिते जिते लिखि चलियो सेते सेते भल आइडिया आसी। तापर देखो आउ कोन कोन जिंस अछि एते वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन हमें कोन करिवि सोशियोलॉजी रे वैल्यू एडिशन हला किछि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट की किछि गुड कांसेप्ट्स को जदि तुम यूज कर पारलो जोटा जो कांसेप्ट गुडा अन्य माने यूज करू ना से भले किछि कांसेप्ट को यूज कर पारलो सपोज सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन फिर भी बहुत पिला लिखिए सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन जदि तुम आंसर रे लिखि पारलो जेएस मिल यस इट कैन वर्क एज वैल्यू एडिशन। अदरवाइज सपोज याकू भी बहुत पिला लिखुछन वैल्यू एडिशन आउ कोन हो तुम नॉर्मल जीएस टॉपिक रू किछि आइडिया आनी कि किछि फैक्ट फिगर ओके ए सब जिंस किछि डायग्राम्स ए सब जिंस आनी कि यू कैन आल्सो एनरिच योर आंसर बट वैल्यू एडिशन फ्रॉम द definition itself means ki it is adding some value to your answer. This is not the main content of your answer. Content is remain the same. So तमे ताको enrich करिया भी extra जिंस किछि लिखियो and specifically in paper 2 as much value addition you can do it is better because paper 1 रे बेसी theory रहियो value addition रो scope बहुत कम अछि positivism interpretivism ता ऊपर क्वेश्चन आसीयो तुमे value addition केते भी करि पारि बट जदि भाबो सेकंड पेपर 2 रे पॉलिटिक्स ऊपर किछि गोटे क्वेश्चन आछि पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी सोसाइटी एंड रिलीजन किछि गोटे आछि तो एथिरे कोन रिलीजन ऊपर थ्योरी सांगरे सांगरे किछि प्रैक्टिकल करंट अफेयर्स रो फैक्ट फिगर किछि नुवा कांसेप्ट यू कैन आल्सो राइट कि एज पर प्यू रिसर्च सेंटर इंडिया रे रिलीजियस हार्डनिंग ही इज ओके गोटे रिपोर्ट आसले प्यू रिसर्च सेंटर रो गोटे रिपोर्ट आसले कि ओवर द लास्ट 10-12 years India society has become more and more religiously hardened माने बेसी एक्सट्रीमिस्ट व्यू आसी सो एटा गोटा जो कोट कल तुम रिसर्च टू स्टडी दिस वर्क्स एज ए वैल्यू एडिशन you can do this specifically in paper 2 रे जते करि पारियो you get more marks. Similarly diagram एबे देखो डायग्राम गोटे टाइप रो वैल्यू एडिशन कोन डायग्राम ता देखो सेम कंटेंट थाई कि डायग्राम ता इज मोर अबाउट प्रेजेंटेशन हाउ यू आर प्रेजेंटिंग ओके तो डायग्राम ता बे टिके नोट करियो किछि पिला कोन कले हाउ टू यूज एप्रोप्रिएट डायग्राम्स आमे सब बेले आखि बुझी गोटे टाइप रो डायग्राम यूज करिया ठीक न ओके नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डायग्राम रो रोल कोन सपोज तुम पाखरे गोटे क्वेश्चन आछि गोटे कंपोनेंट्स लेट्स से कि कंपोनेंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एबे ऑब्जर्वेशन नो कंपोनेंट हला तीनटा लेट्स से सेंसेशन attention perception so you can write like this because these are three such units okay they can be studied independently also but bhabo how would a question assi ki what are the stages of building or stages of research रो stage कोन एबे तुम यदि रिसर्च रो स्टेज एमितिया लिखियो रिसर्च एमितिया लिखियो कि गोटे स्टेज एथिरा लिखिलो कि हाइपोथेसिस फॉर्मेशन how would it लिखिलो कि लिटरेचर स्टडी ना ए टाइप रो डायग्राम दिस इज नॉट एप्रोप्रिएट व्हाई यू नो बिकॉज़ एटा को ऑर्डर रे जने पढिबो एटा डिफरेंट ऑर्डर रे पढिले एटा चेंज ही so don't make this kind of diagram for this एबे स्टेजेस जेतले आसियो you can write like this एटा फर्स्ट स्टेज तापर सेकंड स्टेज तापर थर्ड स्टेज like this some of you had actually made this kind of mistake that is why I am saying or you can write like this ए वाला बॉक्स करके लिख परियो फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज like this जदि गोटे साइकिल देखिया चाहो ताले ए वाला साइकिल कर परियो गोटे वर्चुअस साइकिल और विशियस साइकिल एमतिया कर परियो so it entirely depends on what is the topic that you are trying to represent so accordingly you can also diagramize your answer okay. These are all ideas that you will gradually develop as you write more and more answer jete answer likho toppers copy ro बुझिबो ते बेसी आइडियाज आसी okay बुझी होची अपन तो जहां मु कहली किछ डाउट अछि इतरे any doubts
No, sir. Choose. Okay. Okay, then now let's go through some toppers copies. I wanted to show you a few copies. Let's try to see what are the right things they are doing and which are the wrong things that they are doing. I think this is some Ashish something, someone has written this answer. Okay. ଆମେ ଆମର ଟପିକ ଗୁଡା ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡା ସବୁ ପିକଅପ୍ କରିବୁ ତାପରେ ଦେଖିବୁ କଣ ଆନ୍ସର ଅଛି। सर थिंकर्स ର नेम को बॉक्स रे रखा है कि ना କହିଲି खाली ନା अंडरलाइन करा ବକ୍ସ है अंडरलाइन कର ବକ୍ସ କରନି ओनली सर जो बॉक्स। प्रीवियस କୁହ କୁହ। टेस्ट ହେଇଥିଲା ସେଠି ଶ୍ରେୟାଂଶ sir ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଦେଇଥିଲେ କି ନା ଦେଖ ମାନେ ସେଟା थिंकर्स नेम को बॉक्स रे देखो से एटा किसी हार्ड एंड फास्ट रूल आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू व्हाई आई एम सजेस्टिंग दिस थिंग्स इज दैट किसी टॉपर भी सेमतिया लिखि छन मना करनी इनफैक्ट तुम टीना डाबी रो कॉपी देखियो से तो एसे पेपर रे भी शी हैज आल्सो रिटन लाइक दिस महात्मा गांधी हैज सेड दिस गांधी शी हैज बॉक्स्ड इट देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि एटा हे गेल किसी नेगेटिव इंप्रेशन आसला कि कोन बट ट्राई टू अंडरस्टैंड गोटे जिंस वाला यूनिफॉर्मिटी काहे कि मु कहू छी हमें यूनिफॉर्मिटी एज मच एज पॉसिबल हमरो वे ऑफ राइटिंग रे मेंटेन करे को ट्राई कर जदि हेडिंग को आमे बॉक्स करू एबे बॉक्स टा कोन बेसी विजिबल इट इज मोर विजिबल देन एनी काइंड ऑफ अंडरलाइनिंग राइट अंडरलाइन करिया ठारू बेसी विजिबल तो बेसी विजिबल आमे का करू हेडिंग टा को बेसी विजिबल करू ता तळे जो पॉइंट गुडा को लिखिउ ताको अंडरलाइन करू ताठू लेस रिलेटिवली लेस विजिबल तुम यदि ईच एंड इंडिविजुअल वर्ड को फर्स्ट कथा हला रिसर्चर को बॉक्स करिया को लागियो एबे अंडरलाइनिंग थारू बॉक्स करिया ठारू फर्स्ट कथा हला बेसी टाइम भी जीवो सेकंड कथा हला इट इज आल्सो बिकम मच मोर विजिबल इट विल बी एट पार विथ दिस थिंग यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होबा नै तो कीप दिस थंब रूल कि हेडिंग गुडा को हमें बॉक्स कर दू आ जहां पॉइंट अछि ताकू अंडरलाइन करी दिस आई फील इज अ बेटर वे ऑफ राइटिंग सेमिति किसी हार्ड एंड फास्ट रूल नै कि एटा ही करे पड़े सेमितिया तो अलाइनमेंट भी तुम जो वे रे करि पारो कि मना करछ बट आई एम जस्ट गिविंग यू सजेशन कि एमितिया कले बेटर लागि ओके एनी अदर डाउट्स इन दिस सो फार पर्सनल प्रेफरेंस कार कोन बहुत टॉपर माने बॉक्स भी करंती मैं जानि छी so Shreyans sir might have seen some people doing this and he might have suggested you accordingly also but I feel that overall this is you should underline researchers researcher मानकर नाम तुमे ब्रैकेट भितर भी लिखि पारियो because हमर देखो हमर सब बेले फर्स्ट एंड foremost standard of reference should always be textbooks textbook रे जदी ताकू फॉलो करि पारियो as much as possible तो completely follow होबा नहीं जते फॉलो करि पारि जते जिंस सिखि पारियो then second preference is toppers copies advice is audience okay textbook रे देखियो केबे भी एमती रिसर्चर कोनकर नाम बॉक्स कराय नै मे बी डिफरेंट कलर रे थाई पारे अंडरलाइन करा जैथे पारे बट बॉक्सिंग नहीं न थाई बस ये तो गोटे सेंटेंस रे लिखाई दियो ना कॉमन सेंटेंस है और सेंटेंस रे इंडिविजुअल वर्ड को यूजुअली बॉक्स करा जाए ना एनी अदर डाउट्स ठीक है लेट्स सी सम टॉपर्स कॉपीज सो दिस कॉपी 1C okay let's see this question is sociology a science एबे देखो जने जस्ट बिकॉज़ जने पाई छी एग्जाम तो आमे ब्लाइंडली भी तो भाबना नै कि जहा करछन हम सब जिंस फॉलो करी सेमतिया नै मोर भी जहा आंसर मु देई देबी तुमको देखिया को मान नै कि मु जहा करछि सब तुम फॉलो करियो समस्त किसी ना किसी भूल करंती तो आमे भूल जिंस को भी आइडेंटिफाई करी फॉर एग्जांपल these things I don't like okay ए वाला सब कटिंग क्रॉस मार्क एटा को जते मिनिमाइज करियो अन्य किसी टॉपर मानकर देखियो से कटिंग्स तो बहुत ही मिनिमम था so let's try to understand what are the good things about this answer it's sociology a science you see the first sentence there will always be an introduction and conclusion so far okay so at least what a line and usually it is only one sentence or two sentences not more than that in fact short question put a single sentence intro conclusion but kind of better because you don't have much you should spend more time in the body part so science, how he has started. Science को define से करछि. Science is usually defined as a body of knowledge based on systematic. By the way, usually को काहे कि underline करछि I don't know. Usually is not the right word to be underlined. So if you want to underline here, you should have underlined what science is defined as a body of knowledge based on systematic observation, experimentation, objectivity, empiricism, and theorization of general universal laws. Okay. ठीक है, it's a very excellent way of starting definition start कराई then this is the body part notice this thing एथरे space बेसी नहीं
please try to give a little bit more space. Now take a space देले clearly जाना पड़ेगा कि introduction sorry ची तापर body start है. Second thing to note here is कि here he has not given any heading. ये तो heading किसी नहीं ना. Therefore I feel that if heading ଦେଇଥିଲେ better ହେଇଥାନ୍ତା कि sociology science. Then it to start ହେଇଥାନ୍ତା कि if ଆମେ ଦେଇଥାନ୍ତୁ for example litmus test for a subject or a science. Okay, this could have been a heading. Okay. Then you could have write about these points. ठीक है. As I said कि समस्त writing style same होगा नहीं. So litmus test for a subject to be called as science as theoretical orientation, objectivity, quantifiability, intersubjective reliability. Very good. Now he has tried to explain from sociological perspective. Sociology रे sociologist माने कौन करछन. So although at the time of its conception, sociologists like Comte, Spencer, Durkheim, etc. utilized or advocated scientific methods and terminology for sociology, it was observed in later years that sociology does not exactly qualify the litmus test for a scientific body of knowledge. Okay. Why? Because it fails some criteria of quantifiability. So basically, see against arguments against he has written here. If he had just given this simple heading, then our job, examiner's job would have been better. India heading दवर माने कौन देखो तुम एग्जामिनर रो काम सहज कर दबो ताको बेसी माने से खुशी के तुम मार दो तुम्हें तो जते फोर्स करियो एग्जामिनर को पढ़िया से एग्जामिनर विल गेट मोर इरिटेट सो बट ठीक है so this is arguments against. However, sociologists like Karl Popper argue that science is not a body of knowledge, rather a method of approaching a problem. So now he is focusing on scientific method or methodology. So here he should have written first the heading that arguments for sociology as a science. So in this parameter and this methodology should have underline each. On this parameter, sociology has certain traits with science: critical approach, scientific methodology, spirit of inquiry, definite research methods. Okay. Also, there have been attempts by sociologists to make sociology an objective subject. Max Weber got idea of question, ideal types, ideal type of bureaucracy here talked about. Durkheim got indirect experimentation, multivariate analysis. Okay, very good. So these are basically he is giving the researcher's name. एबे देखो को भी researcher in the box करा जिबा कथा नहीं है. My opinion. पल्ले भी ठीक अछि. My opinion ki it is normal. In fact, here I noticed ki the Karl Popper he wrote this in capital letter, but other जो एठी Max Weber normal लिखी छी, Durkheim normal लिखी. तो मतलब again this principle of uniformity is being violated. So तुमको लागियो बहुत minor जिंस but देखो जेते आंसर टाकू नहीं जेते सब छोट छोट जिंस माइंड रखियो ना आंसर राइटिंग स्किल जेते डेवलप करियो सेते तुमर आंसर टा सेते नेचुरल लागियो आंसर टा जेते नेचुरल लागियो जेते फ्लो रे लागियो एग्जामिनर सेते सबकॉन्शियसली भी एग्जामिनर विल अंडरस्टैंड कि ओके you have you have content and you also have some good ideas how to write a good answer. Uniformity in answer very important, uniformity maintain karo. So therefore it can be concluded that okay, so conclusion here he has written conclusion. तो यारो किछि आ गोटे हेडिंग भी देई परथाना कंसेंसस एंते लिख परथाना ठीक अछि एटा गोटे सिंगल पैसेज जेहेतु होइछि सो इट इज आल्सो वर्किंग एज ए कंक्लूजन सिंगल कंक्लूजन लाइन भले भी यूज so blah blah it is scientific methodology it is a modified science sociologists like a final point sociologists like Paul Fairbrand condemn monopoly of science through concepts like epistemological anarchism. Postmodernist basically तांको कथा भी लिखिछि ए पॉइंट मो हिसाब रे कंक्लूजन न लिखिकना आर्गुमेंट्स अगेंस्ट आ गोटे पॉइंट लिखि देबा कथा बिकॉज़ कंक्लूजन ने तमे गोटे कथा कहउछो प्रथमे यस कहलो तापर नो कहलो तापर फाइनली गोटे कंक्लूजन देलो कि ओवरऑल कोन तापर कंक्लूजन पुणी गोटे नो पॉइंट वाला को मेंशन करेटा ठीक है. So what I was telling you कि blindly do not follow everything but एटा कोन कि आंसर लागु कि आंसर टा तू से पिलाटी honestly गोटे एग्जाम हॉल ले बस कि 5 मिनिट और 8 मिनिट रे संग संग लिखि छै जा माइंड को आस. So for that reason इंडिया टिके टिके एफर्ट सपोर्ट अछि so that is also fine. बुझी होची कोन कोन जिंस ठीक अछि कोन कोन जिंस भूल अछि आंसर रे एथरे किछि पॉइंट एथरे किछि नोटिस करि पाछो आ किछि पॉइंट में किछि मिस कली कि some good things he may have done, some mistakes he may have done. Did I miss anything? If you feel good, you can share. Okay, ठीक है. So next time कौन देखियो? Please. कौन से टॉपिक गुड़ा उठो ची जहाँ पर हमें डिस्कस करी चुके हैं.
common sense knowledge and sociology. Okay, see this question. Common sense knowledge is different from sociology and is often contradictory and inconsistent. Elaborate the statement. ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ ମୁଁ introduction to sociology first topic ର ଯୋଉ note ଦେଇଥିଲି ସେଥିରେ ଗୋଟେ point ଗୋଟେ page ରେ ଗୋଟେ point କୁ briefly describe କରିଥିଲି what is the difference between common sense knowledge and sociology. There I had also given example of Durkheim's concept of suicide. suicide ଗୋଟେ normal ଲୋକ ମାନେ କହିବେ କି ହଁ ଗୋଟେ କଣ personal reason ପାଇଁ ହେଇଥିଲା, but Durkheim said कि no personal reason ठाରୁ बेसी important ହେଲା social factors. जो सोसाइटी रे जो सोशल डायनामिक्स ऊपर डिपेंड करे कि से सोसाइटी रे को टाइप रो सुसाइड हबो केते रेट रे सुसाइड हबो एटा को कोन से ଗୋଟେ डिटेल रे स्टडी करी कि सिस्टमैटिकली ही डेवलप्ड ए थ्योरी. so this is one example कि common sense knowledge और sociology केमिता डिफर कर. so ए वाला let's try to see कि how what are the good things he has written. According to Max Weber, common sense is the routine knowledge we can have in our everyday world and activities. Very good. He has also underlined this Max Weber, common sense, routine knowledge. Next, you see immediately heading. Heading to boxing paralysis. So, highlight here, jana purchi, okay, to body ka start is. So, what are the differences between common sense and sociology? One thing he could have done, ki common sense to do time the box karke likhi hota, bota side of common sense, bota side of sociology. But he has written this in point format. Common sense is based on presumptions, conjectures, and stereotypes, whereas sociology is based on logic, reason, and sensory perceptions. Theory, he missed this part. Theory is also very important. Theory, data, yeah, be based. This is something he missed. Common sense is often personal and can't be backed up by data or facts, whereas sociology is usually empirical. Very good. Okay. Common sense is often narrow and limited, but by specific personal experiences and environment and vicinity, whereas sociology is often wider and universal. Common sense is not usually tested, very good, but sociology is based on the core of testability. Here you can, if you go through the details of sociology as a science, we had discussed about Karl Popper's theory of falsification. You can also write about falsifiability. Common sense knowledge रे falsifiability ର concept किछि नाही, ସେମାନେ confirmation bias ही है. But को भी theory हमें develop करछु, सब theory नो बहुत सारा theory को test है कि sociology रे आसु. And the common sense is unreflective, does not question its origin. Okay, sociology रे question करा होची. Common sense is intuitive, naturalistic explanation provide करे. Sociology goes beyond the surface and looks for deep lying interpretations. Very good. There are example, this is suicide example दिया है how what Durkheim what how he found what is the common sense explanation, what is the difference. Then labor capital conflict, Karl Marx कथा को आई थी capitalism का idea. तो ये बड़ा सब example through रहे he has explained. However, common sense also helps sociology in some ways. देखो what he did was that actually question or demand थी like दूसरा भी difference common sense how sociology भितरे. So major focus was on the difference. But a way sort of way forward this second कहला कि sociology और common sense are also complementary to each other. So एटा way रे कोन ଗୋଟେ third perspective दिया हला, but because this was not directly asked, therefore he has spent less space on this. Okay. And finally this is the conclusion. Okay. This is the structuring of your answer. बुझी होची ए आंसर टा मतलब होची it is much better than the other answer that we discussed, because ए आंसर टा बेसिक कोहेरेंट अछि how भलो uniformity बहुत जिनसरे maintain हिची. Examples, he has given enough examples, sociologists मानकर नाम सब mention हिची. Okay. So in many ways I feel that this is a better answer. Now let's see this copy is I think Jagrati Awasthi's copy. Let's see some questions. 1B. 1B question देखो, discuss content analysis as a method of data collection. First of all, notice something. एबे देखो, presentation of this person is much better than presentation of this person. एबे overall यांकर copy ए पिलार copy बहुत ही neat and clean लाଗୁଛି. देखो cutting पूरा minimal cutting. जोठ भी cutting हिची बहुत ही less. एबे इठी cutting हिची टिके cutting हिची. Maximum जगह रे cutting नहीं, बहुत clean. Uniformity also seems to be there. Underlining हिची. Align spacing and alignment देखो.
एठू लिमिटेशन गोटे हेडिंग स्टार्ट हला एठू ता अंडर एति स्पेस एठी होइछ ना तो दैट मींस कि ए सब पॉइंट गुडा ए या अंडर रे आसु ओके सिमिलरली जेतले पैराग्राफ लिखा होची सेतले इंट्रोडक्शन गोटे पैराग्राफ अछि तापर एठी टिके स्पेस अछि देन नेक्स्ट बॉडी पार्ट अछि तो जणा पड़छि कि कहा पर कोटा स्टार्ट होछि तो आई थिंक कि दिस हैज एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन माने पढिया को ये आंसर कॉपीटा पढिया को भल लागे नाउ लेट्स ट्राई टू सी व्हाट शी हैज रिटन content analysis Babi defines content analysis she forgot to underline this researcher to underline correctly defines content analysis as study of written communication such as interviews books paintings okay very good it's a tool of interpretative social research and may also be used for analyzing open-ended questions in a written interviews she is lacking one thing notice ki she is बहुत सारा important keyword को highlight करू ना you should highlight as many keywords as are important. Now, during content analysis, the investigator classifies content into precisely defined categories. These categories are pre-decided by the investigation or investigator. Such classification helps in understanding the structure of the communication. Advantages, significance. If she wanted देखो ऐसे problem है कि गणा पुण्य की टाउन हुआ heading है. You should have given this heading and क्या देखले better बना. Advantages and significance कौन? Classified content can be scientifically analyzed and even be processed. Scientifically analyzed should have been underlined and processed during using computers with the help of statistical methods. Okay, very good. Then it helps in holistic analysis of communication in terms of antecedents of communication, characteristics of communication, effects of such communication. Okay, very good. Then next is limitations. Again, the problem होची कि এটা ଗୋଟେ simple type ର এটা କେବଳ underlining ହେଲା if she wanted she could have done this এটা better ହେଲା ଏମିତି ହେଇଗଲେ এটা ଗୋଟେ headline limitation ରେ କଣ subjective dispositions of investigation impact classification okay ତା ମାନେ subjectivity ଅଛି interpretation ପାଇଁ quality of analysis is only as good as the quality of documents available okay only manifested meanings are analyzed and latent meaning are difficult to decode very good so you should have underlined these things also. So in contemporary content analysis is used along with semiotics for deeper understanding. Very good. So यार strength कौन? This person major strength is that very neat and clean writing, presentation, excellent presentation. Content is very good, practical, बहुत ही practical answer. Another thing to note here, you should note that there is a flow of answer. बहुत ही बढ़िया flow ଅଛି, ଗୋଟେ natural flow रे ଗୋଟେ ଚାଲିଛି. So this is we can understand that this is her natural way of writing. बहुत ही बढ़िया अछि गोटे पैराग्राफ रो आ गोटे पैराग्राफ बढ़िया naturally flow होछि. So flow presentation is जिनस भलो अछि. किछि जिनस lacking अछि content भी भलो अछि. Lacking कोन अछि ना से ए बॉक्सिंग हेडलाइन को बॉक्स करिया की टर्म्स को अंडरलाइन करिया this person is not doing so एटा कर देले आंसर ता और बेटर हो जाता. One last example we will take 3C. ABC. Importance of hypothesis and formulation of sociological theories. So hypothesis refers to a tentative statement explaining the expected relations with different variables in a sociological research. This is one definition, very good. You could have also written ki hypothesis is defined as the tentative statement giving IV-DV relationships, independent variable, dependent variable. Okay. Or the relation among the variables under study. Very good. Now, notice one thing here. There is one mistake here. Discuss the importance. Question is importance of hypothesis formulation. Because one thing she did, she wrote this sources of hypothesis. Point is the question was not on sources of hypothesis. So please avoid, and some of you have written like this. Please avoid this kind of things. What is not asked, please do not write it because you are not going to get, you are not getting any marks for this. So किछि मार्क जदि मिलु नाही गोटे जिंस ऊपर ताको लिखि तुम तुम्हारा टाइम काहे वेस्ट करी. And also if you write too many unasked for things in your answer, examiner will get irritated. Many of you have done this. We will discuss some of your copies also. जहाँ क्वेश्चन पचरा है ता ऊपर फोकस न करिकि अन्य जिंस ऊपर बेसी लिखले एग्जामिनर विल गेट इरिटेटेड. If the question is asked पुनी देखो एटा 10 मार्कर क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिकली पचरा है इंपोर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस. डायरेक्टली टू स्टार्ट कर इंपोर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस.
राइट few points जहाँ भी तुमको लिखियार अछि you can expand on these points एगुड़ा को जते expand कर पाले किछ असुविधा नहीं but is the sources of hypothesis asked this is not asked वे भाबो जे क्वेश्चन था discuss about hypothesis or describe hypothesis ताहले तुमे sources of hypothesis लेखो importance लेखो limitations लेखो ताहले जहाँ लेखो किछ असुविधा नहीं because तुमर कीवर्ड ता सेटिंग हिंदी डी वेग अछि डिस्कस डिस्क्राइब एगुडा अछि बट जतले सिंपली तुम पचरा छि इंपोर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस और डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ हाइपोथेसिस और एग्जामिन द एडवांटेजेस ऑफ हाइपोथेसिस ततले गोटे स्पेसिफिक वर्ड आसीगला एडवांटेज और इंपोर्टेंस ततले ता ऊपर ही हमको फोकस करियार अछि so now these points should have been focused. Okay, importance of hypothesis found it directs the research in the desired direction. Very good. Delineates the scope of inquiry, limits the scope of data collection, and thus saves time and money. Okay. Hypothesis helps in testing theory. Very good. This is the most important part. Theory testing may help for the first step in theory testing. One of the earlier steps. When validated, hypothesis results in generalizations, concepts, and discovery of laws. Very good. In general, generalization of law kotha kuha jauchi. Hypothesis helps in choosing the appropriate methodology for sociological research. Okay, very good. Now the positivist, ebe dekho what she has written here. She should have given this heading ki importance of hypothesis in social research or sociology. ebe eta koi ki heading देथिले eta better नहीं because initially important जे कोटे general in general generic importance कोडा लिखि दिया है ebe sociologist मान को perspective ru she is trying to explain. So this is still related to the exam sorry the question jari pachara hai importance kotha koha hai kotha ame generic importance discuss kolu ebe sociological perspective ru discuss kolu so positivist mane kon kahile ethnomethodologist mane kon kahile phenomenologist mane kon kahile symbolic interactionist mane kon kahile so she has written about this is good that she has mentioned sociological research. Finally the conclusion is there that hypothesis building is a common tool of sociological research. It must be simple, based on limited assumptions and be empirically verifiable. अच्छा हाँ verifiable okay empirically verifiable in a time bound manner. Okay, so this is the conclusion. This is also a nice conclusion. So this is also a good answer. ebe ya ethre kichi point do you want to discuss anything in this maybe something I missed or do you have any doubts in this kon jinsa thik achi kon bhul achi बुझियला ओवरऑल भला आंसर खराब आंसर डिफरेंस कौन Okay, sir. okay so I wanted to discuss few of your copies also but time ete besi nahi so I think we should move on to the next part. So answer writing skill is a major part of sariyala. Next we are going to discuss a bit about the revision, time management and productivity. Okay, so yeah related jaha doubt achi please ask me, we will take these things up. Sir, इससे related question पचे करो. इससे रिलेटेड कहीं आज तो सोशियोलॉजी क्लास है इससे रिलेटेड पचारन तो नहीं चाह पचारी नहीं इससे रिलेटेड पचारन टुडे इज आवर सोशियोलॉजी क्लास ओके जीएस और जनरल क्लासेस रिलेटेड जिनसे हम वो डिस्कस कर सकते हैं सो आई डोंट वांट टू डिस्कस ऑल दोस थिंग्स okay if you don't ask any specific things then I will talk about generic things in general revision केमितिया करी सर एबे जो जागृति अवस्था तांको खाता देखले आपण कहले कि नेचुरल फ्लो रे सेटा होची सेटा केमिति आंसर रे हमर आसी परिबो माने गोटे नेचुरली हमें भी लिखि परिबो ओके नेचुरल फ्लो देखो किछि लोकंकर नेचुरल वे ऑफ राइटिंग सेटा हिता जदि तुमरो सेटा नाही then instead of forcing it on yourself what you can do is कि फ्लो न हेले आउ गोटे तार अल्टरनेटिव अछि कि बुलेट पॉइंट्स रे लिख जदि फ्लो न आछि ठीक अछि ताले तुमरो आंसर वे ऑफ आंसर राइटिंग विल बी डिफरेंट बट स्टिल यू विल गेट गुड मार्क्स तो तुमे निजो को फोर्स करो नाही कि अन्य भलिया नेचुरल होबा व्हाट यू कैन डू इज कि जदि फ्लो नाही ताले इंट्रोडक्शन गोटे लाइन लिखियो कंक्लूजन गोटे लाइन लिखियो बॉडी पार्ट तक जते बुलेट पॉइंट आ जते डायग्रामाइज्ड वे रे लिख परियो फॉर एग्जांपल लिखिया चाहू कि लिमिटेशंस ऑफ कंटेंट एनालिसिस
लिमिटेशन सब कंटेंट एनालिसिस को गोल करके स्पाइडर डायग्राम भलिया तार 4-5टा लाइन ड्रॉ करी सेतर लिखि दो केवल की फ्रेजेस लिखि दो there are many people who write like this in general also gs copy रे तो मु कहि पिलान को मु प्रेफर करे to write in bullet forms because gs रे तुमरो एते डाइवर्स टाइप ऑफ क्वेश्चन आसीयो कि सेते तुमरो माइंड ता सबले स्विच करथो तो तुमको बेटर हो कि जदि तुमे बुलेट पॉइंट रे जते लिख करियो टाइम भी सेव हो प्लस you'll also be able to write all the things ऑप्शनल पेपर कोन टिके ना टिके फ्लो दरकार स्पेसिफिकली जदि तुमरो ऑप्शनल ए जो सोशल साइंसेस अछि लिटरेचर अछि ए सब जिंस जदि ऑप्शनल अछि ताले टिके फ्लो दरकार बिकॉज़ जो लोक माने को कॉपी देखिए दे आर मोर यूज्ड टू सीइंग दिस फ्लो काइंड ऑफ आंसर्स ओके समान को सब सब आंसर जदि बुलेट पॉइंट दबो समान टिके इरिटेट ही करना सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इन ऑप्शनल दैट टिके मिक्स करके लिखियो मैक्सिमम जिंस जते बार माने जोडा बॉडी पार्ट रे बेसिक कंटेंट अछि तो पाखरे तो बुलेट पॉइंट लिखि दो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन और अदर पार्ट्स को जते फ्लो रे लिख करियो पैराग्राफ वाइज जदि गोटे क्वेश्चन ऊपर भलो आइडिया नाही ताले सेटा को एज फार एज पॉसिबल राइट इन पैराग्राफ्स बिकॉज़ यू कैन फिल अप योर आंसर जे तुम पाखरे बहुत अधिका कंटेंट अछि ओके और टाइम कम अछि ताले बुलेट पॉइंट लिख करियो आ जदि तुमरो नेचुरल फ्लो अछि ताले बहुत भलो कथा फ्लो रे लिखि पारियो गोटे पर गोटे पैराग्राफ से भलिया बहुत सारा टॉपर्स कॉपी अछि टीना डाबी तार सी द कॉपी हर कॉपी इज वेरी नो वेरी फ्लोइंग कॉपी so that is good but जदि तुम natural way of writing सीटा न हो ताले निजो को फोर्स करो नहीं you write in your own natural way तो बुलेट पॉइंट पे फोकस कर करिए ठीक है so let's discuss a little bit about revision how to revise ଏବେ ଦେଖ revision ର main ଜିନିଷ होची कि revision is also about timing be very cautious about this बहुत पिला बुझन बहुत पिला हन रिवीजन कोन बसी हम रिवाइज बसी तो पढ़ियार अछि ना बार बार पढ़ियार नहीं बार बार इट्स more about timing than about just about reading anything the second point about revision is about active revision okay or processing so timing and processing these are the two things try to understand what this means first thing is कि तुम आदि आज गोटे सब्जेक्ट पढ़ाला क्लास रे सेतमे हम बार बार कोइ कि क्लास रे जहा पढ़ाला से दिन और ता पर दिन ट्राई टू गो थ्रू इट एटलीस्ट वंस जदि आज इवनिंग क्लास अछि तो सपोज रात्रि तुम पाखरे टाइम ठीक अछि तापर दिन सकाळे ताक पढे माने एवरी क्लास से 24 आवर भीतर ट्राई टू रीड इट वंस हेले कोन हो इमीडिएटली जो नुवा कांसेप्ट माइंड रे आसी दियो सेटा विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यू नीड टू रिवाइज वंस एबे गोटे दिन रिवाइज कर साला परे नेक्स्ट रिवीजन यू कैन शेड्यूल इट फॉर 7 डेज और 10 डेज विद इन दैट पीरियड बिकॉज़ से थरे रिवीजन ने सेति टाइम से चालियो 7-8 दिन पर पुनी से टॉपिक टाको आउथरे टिके रिफ्रेश करबो तापर नेक्स्ट रिवाइज करो 15-20 डेज पर पुनी आउथरे हेटा रिवाइज करो तापर 30 डेज पर आउथरे रिवाइज करो दिस इज द आइडियल रिवीजन टाइम one day 1 week 15 days 1 month but practically I know that this is not practically possible है ना तो माने कहो सर practically possible नहीं गोटे टॉपिक को एत थर रिवाइज करिया practically कोन possible so what is the alternative is कि देखो एटा जदि आइडियली करि परियो तो भलो कथा गोटे डायरी मेंटेन करके लिखि परियो आज दिन रे ए टॉपिक हम पढिली तार 7 दिन पर सी सेम टॉपिक पढियो आउथ रिवाइज करियो 15 दिन पर आउथ रिवाइज करियो तो एटा हले कोन शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी चली जाय दिस इज एम्पिरिकली प्रूवन ओके द अल्टरनेटिव टू इट कि जदि एटा करि होबो नै एंड करिया बहुत डिफिकल्ट बात होय हला मु बहुत थर करियो ट्राई करछि 100% केबे हुए नै तो अल्टरनेटिव इज कि फर्स्ट जो दिन जहां पढाला जस्ट रिवाइज इट वंस नेक्स्ट मे बी 1 मंथ पर पुनी से टॉपिक टाको आउ थरे रिवाइज कर दियो बट मोर इंपोर्टेंटली एते थर रिवाइज करिया टू बेटर एक्टिव रिवीजन सब करियो एक्टिव रिवीजन माने कोन जतले तुम पढु जो सेतले आमे कोन को थरे देखि दिलु तापर पुनी आउ थरे सेंटेंस गुडा पढि डोंट जस्ट रीड द सेंटेंसेस ट्राई टू रिकॉल कॉपी टाको क्लोज करके ट्राई टू रिकॉल कि सपोज कंटेंट एनालिसिस ऊपर तुम पढु आज कंटेंट एनालिसिस रिवाइज करियार अछि फर्स्ट यू ट्राई टू रिमेंबर कंटेंट एनालिसिस ऊपर मते कोन कोन मने अछि जिंस लेट्स से कि गोटे बाबी रो मन पड़ी गला तुमरो डेफिनेशन बाबी हैज डिफाइंड दिस कंटेंट इज द मीनिंग ऑफ कंटेंट एनालिसिस गुड पर तापर आ कुछ मन पडु नाही स्टिल यू फर्स्ट ट्राई टू रिकॉल देन जहा जहा मन पडु नाही सेई जिंस तले नोट पुनी आउथरे देखिलो तुम कॉपी रे अंडरलाइन इट हाइलाइट इट थर्ड वे ऑफ डूइंग दिस इज यूजिंग फ्लैश कार्ड माने होची कि छोटो छोटो निजे हाथ रे तुमे कार्ड टाइप रो बनी पारी ईच कार्ड रे बहुत ही अल्प अल्प इनफॉरमेशन जे कोनसी टॉपिक ऊपर लिखि की
मे बी गोटे टॉपिक ऊपर 5टा फ्लैश कार्ड ही पारे, गोटे टॉपिक ऊपर 10टा ही पारे, 15टा ही पारे। बड़ टॉपिक अछि फंडामेंटल राइट्स, ता ऊपर 50टा फ्लैश कार्ड भी ही पारियो। छोट टॉपिक अछि कंटेंट एनालिसिस, ता ऊपर हार्डली 3टा कि 4टा फ्लैश कार्ड ही पारे। तो ईच फ्लैश कार्ड रो कोन फ्रंट रे गोटे क्यू और हिंट लिखाई और क्वेश्चन लिखाई ता पछरे तार आंसर ता लिखाई। फॉर एग्जांपल इफ यू आर मेकिंग अ फ्लैश कार्ड ऑन रिसर्च मेथड्स, तो फर्स्ट लिखि दियो कि रिसर्च मेथड्स स्टेप्स, सेटा गोटे साइड रे लिखाई दियो, ता पछपटे तार आंसर लिखाई दियो सब स्टेप। तो निजे हेटा को रखी कि कार्ड रो फ्रंट पार्ट को रखी तुम मन पकेबो ट्राई करियो कि ओके स्टेप्स कोन कोन थिला, मे बी 3-4टा स्टेप्स माइंड रे आसीयो, तापर आसलानी, तापर बुली की देखियो कि ओके ए स्टेप थिला, तापर से कार्ड टा को पछो दबो, तापर नेक्स्ट कार्ड टा को पढियो, देन ट्राई टू रिकॉल। दिस विल हेल्प यू इन एक्टिव रिकॉलिंग। तो तापर कोन करे गोटे राउंड परे तापर कार्ड को रैंडमली शफल करिकी जे कोनसी कार्ड को बाहर करिकी देन ट्राई टू रिकॉल। So if you can do this, this will make what? This will make deeper level processing of the topic in your mind. जेतबे deeper level processing हुए सेतबे memorization better हो जाए। मु तुमको किछि भी रोट memorization करियो कहू नहीं, मु कहू नहीं कि फ्लैश कार्ड को उल्टे की तरह आंसर को घोषियो। You just active recall through रे revise कर, ता through रे better मन रहियो। I have done this and it works as a wonder। बहुत लोग याको यूज करते same concept। Okay, this is about revision that I wanted to say। Okay, last point about revision is that always before exam you should try to revise about 70 to 80% of your entire syllabus। तो एटा सेते बेले ही हे परियो जेतेले तुम पाखरे तुमरो निजरो बहुत ही क्रिस्प नोट्स अछि। एंड दिस इज द इंपोर्टेंस ऑफ नोट मेकिंग। नोट मेकिंग रो मेन पर्पस इज नॉट टू हैव एन अल्टरनेटिव टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक तो ऑलरेडी अछि। नोट मेकिंग रो मेन पर्पस हला तुमको बहुत ही शॉर्ट रे तुम काम को आसान करिया पे बहुत ही शॉर्ट रे तुम पाखरे एमितिया जिंस रहया दरकार जाको लास्ट मिनिट रे रिवीजन कर करी। लास्ट मिनिट रिवीजन सेटे सेतले ही कर करी, एतले बहुत ही भलो बहुत ही क्रिस्प नोट्स तुम निजरो नोट अछि जाको तुम निजे एफर्ट दे करथि। So once before your exam you have to try to revise all of your notes, and setpai jetala note making kariyo setale make very crisp notes, do not make very lengthy notes। सेमतिया नोट मेकिंग एमितिया करे जते डायग्रामाइज जते पिक्टोरियल वे रे नोट कर पारि सेते बेटर मन रहियो। ओके, so these are all about revision। मन do remember one thing, anything that is not revised you will not be able to recall। ओके, एग्जाम सरला पर सब जिंस मन पड़ियो, एग्जाम हॉल ले सब जिंस मन पड़ियो नहीं। So try to maximize most of the things that you want to write। So revise kariyo exam। Okay, this was all about revision। Next one is time management। Okay, time management and productivity। Last thing about time management and productivity दी तीनटा concept मैं तुमको कहबी तापर हमें class end कर दो। So within 15 minutes will be done। Try to understand this concept, very important concept। If you can use it you are going to have extraordinary levels of productivity। मुझे boast करी को नहीं, this I'm saying this from my own experience। Now there are two concepts। Okay? One is highest impact task, the other concept is biological prime time or biological peak time। Try to understand the mane kon। highest impact task माने होची तमे आमे गोटे नेचुरल फेनोमेनन देखिछु कि नेचर रे जो भी जिंस किछि भी गोटे आउटकम थाए तारो 80% of that outcome is due to 20% of the factors। Okay? Means maximum amount of outcome ta hochi gote minimum level of factor or reason ta। So these are the highest impact tasks for most important factors। when you can identify these factors then you can maximize your effort towards them। जेमिति कि आमो पई यारो इंपोर्टेंस कोन, आमे क्वेश्चन पेपर तुमे को भी ईयर रो क्वेश्चन पेपर को भी सब्जेक्ट रो उठे कि देखो सबु जे कोनसी सब्जेक्ट रो सबु चैप्टर गुडा इक्वली इंपोर्टेंट। किछि चैप्टर सबले मोर इंपोर्टेंट हितो देन अदर्स। themes तुम उठे नो यूपीएससी और ओपीएससी रो थीम, some theme are much more important than others। renewable energy, sustainability or sustainable development goals, poverty, development, these are important themes। तो थीम ऊपर तुम यदि नोट और तुम अंडरस्टैंडिंग बहुत भलो हो, नोट बहुत भलो से प्रिपेयर कर दीजो, बहुत सारा आंसर लिखिजो, तार रिलेटेड तो बहुत सारा क्वेश्चन आसो, सेटा को घोरे फिरे के आसो। if you can identify okay these are my highest impact tasks then your job is can be easily done। so your first job is to understand कि these are my highest impact tasks। सेम जिंस तुम भाबो गोटे डे रे हाईएस्ट इंपैक्ट टास्क कोन हम पढियाटा तुम पे हाईएस्ट इंपैक्ट टास्क within even under studying with, if you take different subjects some subjects are more important than others।
Art and culture is not that important, but environmental ecology is more important. So for you, environmental ecology is highest impact task, quality is highest impact task, economy is highest impact task. So first identify your highest impact task. The second concept is biological prime time or biological peak time. Try to understand what this means. ଏବେ ତୁମେ ରିଏଲାଇଜ କରିବ କି ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି କି ତୁମେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଗୋଟେ ନିଜେ ଗ୍ରାଫ କର, ନିଜେ ନିଜକୁ ରେଟିଂ କର कि केते तुमर एनर्जी लेवल हाई अछि और लो अछि. Do this for yourself and try to understand कि at which point of the day your energy level is at the highest. For example, if I say about myself, मोर एनर्जी लेवल ना सकाळे उठले मु टिके लेट रे उठे, 9टा 10टा पर्यंत भी एनर्जी लेवल लो थाए, मते स्लीपी स्लीपी लागे. तो 10 10:30 पर धीरे धीरे एनर्जी लेवल बढ़े. एनर्जी लेवल यू कैन आल्सो अल्टरनेटिवली से अबाउट एबिलिटी टू फोकस, एबिलिटी टू बी अटेंटिव केतेबेले बेसी थाए. जदि सेटा को आमे देखियो मोर सेही लेवलटा 10टा 11टा बेलको टिके टिके बढ़िया स्टार्ट करे, 11 रु 12 गोटे पर्यंत बेसी रहे, गोटे पर पुन धीरे धीरे कमिया स्टार्ट करे. वंस आई हैव लंच इमीडिएटली इट रिड्यूसेस. हाउ सेता बहुत निद लागे, बहुत टायर्ड लागे, एग्जॉस्टेड लागे, ओके, आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग. Then again it will start picking up from 5 o'clock 6 o'clock, then from 6 to 9 or 10 it is at the highest peak, माने बहुत हाई लेवल भलो पढ़ी पारी मेंटेन करि पारी. Then again 10:30 11 पर्यंत धीरे धीरे रिड्यूस करिया स्टार्ट करियो, 11 पर पुनी रिड्यूस करियो. Now यार पॉइंट पर्पस कोन, when you understand your graph, then the peak time are known as biological prime time or biological peak time, जो टाइम रे तुम्हारो एनर्जी और अटेंशन लेवल हाई होछ. Now we are going to combine these two concepts. Remember this thing, to be more productive, you always try to do your highest impact tasks during your biological prime time. Okay, I'll repeat this. In order to be more productive, always do your highest impact tasks during your biological prime time. माने जेतेबेले हमरो एनर्जी और अटेंशन लेवल हाई रहइबो, सेतेबेले ही हमें ट्राई करिवु जो जो जिनसटा जो फैक्टरटा हमकु मैक्सिमम रिजल्ट देबो सेही कामटा करियो. तो यार प्रैक्टिकल आउटकम कोन हबो, ता माने इया कि जदि तुमको लागुची कि मॉक टेस्ट दबाटा मो पई हाईएस्ट इंपैक्ट टास्क, मो पई बहुत इंपोर्टेंट जिंस, तले सेही टाइम रे मॉक टेस्ट दियो जेतेबेले तुमको एनर्जी लेवल अधिक अछि. जेतेबेले तुमको लागुची कि जो सब्जेक्ट उडा, लेट्स से कि एनवायरनमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, ओके, दीस आर मोर इंपोर्टेंट, you study them when you have high attention. Lower level or less important जो टॉपिक गुडा सेउडा को लेस अन्य टाइम रे पढो. ओके, जेते आर्ट एंड कल्चर को 4टा 5टा बेले पढि परिबो. ओके, इंटरनल सिक्योरिटी सोसाइटी याको तुमे अर्ली मॉर्निंग रे भी पढि परिबो, बट इंपोर्टेंट टॉपिक गुडा को हाईएस्ट लेवल ऑफ अटेंशन रोचे तल पढि. सेकंड corollary और सेकंड आउटकम टू दिस इज कि start treating different times of your day different, and specifically when your energy and attention level is at the peak, when it is your biological prime time, try to be more productive, don't waste time of that time. माने होची सपोज तुम गोटे तुम सांग और तुम घर लोक तुम किसी गोटे काम करिया कहले, तुम सांग किसी गोटे कहले कि तुम ए कामटा कर, चलो हम जीवा बुलिया बुझबा, तो कहबो ठीक अछि, तो 4टा 5टा बेले बुलिया बुझिबो, सकाळे बुलिया बुझिबो, किंतु जेतल मोर एनर्जी अटेंशन लेवल हाई अछि मुझे बुलिया बुझिबो, माने सेही टाइम ता डेडिकेटेडली दैट इज फॉर स्टडीइंग or working, whatever is your highest impact task. It should be, you should religiously protect that time. I do it all, माने मोर कोन वे जेंति कि मते केही किछि फालतू काम करिया को मते यदि कहले मु सब बेले ताको सेही टाइम रे शेड्यूल करी जेतले जानछि मोर एनर्जी अटेंशन लेवल एते बेसी नथियो, बिकॉज़ मो पई सेते इंपोर्टेंट नो. ता माने नो कि मु सेति के एफर्ट दउ नै, ता माने होछि कि मु मोर टाइम ताको इफेक्टिवली, मोर रिसोर्स को इफेक्टिवली केमति एलोकेट करे. मते के मूवी देखिया कह ठीक अछि, मु जीबी 4टा 5टा बेले जीबी जेतले मोर एनर्जी लेवल एते बेसी नथियो, मु सेते बेले जीबी नै जेते मु बेसी भलो प्रोडक्टिव काम करि पारि, पढा टाइम रे पाठ पढी. ओके, many people when they ask me to schedule calls कि केतले हमें कथा ही करी किछ डाउट पचरी, I usually give them the time after lunch, because मो पई सेते प्रोडक्टिव मु तो से सेम रट्टा मारला बेले सेम जिंस सब आंसर सब देई चाली, 2:30 बेले भी देई पारी, दिन 10टा बेले भी देई पारी, किंतु 2:30 बेले मु यदि कन्वर्सेशन को फिक्स करबी, इट इज बेटर फॉर मी, बिकॉज़ दिन 10टा 11टा बेले मु मोर अन्य काम करि पारी जोटा मो पई प्रोडक्टिव. दिस इज नॉट हाईएस्ट इंपैक्ट टास्क फॉर मी, बुझी बुझी. So this is how you manage your time, and this is also, you see what is the link between time management and productivity. These are explicitly or implicitly they are concerned.
If you do not understand the importance of your time, then you will not be productive at all. ବୁଝିହେଉଛି କିଛି ଡାଉଟ୍ ହଉଛି ଏଥିରେ? सर ହୁଁ सर किछि टॉपिक्स अछि जेमति कि धर सपोज बोर हैला कि ये कला लागिला तो से टॉपिक गुडो को हमें केमते कवर करियो माने ना वीडियो देखि कि माने एते एग्जॉस्ट बड़े बड़े लागी जाउची ताको टोटल पढिबा पई भी इच्छा तो केमते डील करिवो ओके एग्जॉस्टिव लागिବାର ବହୁତ ସାରା रीजन हि ଥାଇ ପାରେ फर्स्ट थिंग इज either it is too complex second reason is कि topic itself is very dry ଏବେ ଯେମିତି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ଚାପ୍ଟର 2 ଆଉ 3 ପଢେଇବା even though I have read it before because the topics are very dry research method को तुम्हें केते भी इंटरेस्टिंग बने पारियो whereas some other topic like politics religion is more interesting तो ता ऊपर पढिଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ ବି बेसी इंटरेस्टिंग थांदा पर କଥା ହଉଛି जाल तो हम पढियो पडियो so what did I do to make things more interesting always try to relate it to something more interesting or try to relate it to the daily something which you experience daily जहाँ को जेतले रिलेट करि परियो सेतले जिंस इंटरेस्टिंग हे फॉर एग्जांपल कंटेंट एनालिसिस से टॉपिक रो नोट रे भी देखो बहुत सारा जगह मु एग्जांपल देछि डेली लाइफ रो टॉपिक देखिया गले को भी टेक्स्ट बुक रे किछ भी इंटरेस्टिंग जिंस नाही बहुत ही बोरिंग वे रे एक्सप्लेन करा जाय बट आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कंटेंट एनालिसिस जिंसटा एक्चुअली कोन रियल लाइफ रे हम केबे ताको देखि छु कि कोन कर देन आई जेतन मु पढे कि रियलाइज कली कि हां रियल लाइफ रे भी तो एटा यूज हेछि तो आई हैड गिवन यू दैट एग्जांपल गोटे जो वेबसाइट रे जो न्यूज़ गुडा आसेनी कि प्रधानमंत्री आज तांको भाषण रे 10 थर मेंशन कले जम्मू कश्मीर को थरे भी मेंशन कले नि लद्दाख को दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंटेंट एनालिसिस कंटेंट को एनालाइज करके समान गोटे निष्कर्ष बाहर करछन दिस इज समथिंग दैट यू हैव एक्सपीरियंस नाउ यू कैन रिलेट टू द टॉपिक because now you related an abstract concept with a daily thing so it's all about how we can relate what we are studying with day-to-day activities so this is one thing second thing is jodi boring ethi pai because it is very complex jodi complex pai jinsota boring laguchi then you have to simplify things and simplify kariya pai gote bahut hi bhalo technique achi ta kondi feynman technique किछि पिला तो प्रोनाउंस करनते फेनमैन बोली because the name is pronounced as Feynman Richard Feynman he was a great scientist physicist से गोटे बढ़िया गोटे मेथड देइतिले ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस जत्ते बेले भी को टॉपिक हमें को भी टॉपिक को भलो वे रे केमते बुझी पारी तो ता पे गोटे टॉपिक को भलो रे बुझिया पे यू ट्राई टू इमेजिन और यू डू इट आल्सो तमे भाबो कि तुम गोटे छोटो पिला को से जिंसटा बुझियार अछि तो छोटो पिला को किछि भी जिंस बुझिया पे हमको कोन करिया पड़ो से जिंसटा बहुत ही सिंपलीफाई करिया पड़ो सेमिति सिंपलीफाई करी करी जितने सिंपल हे परियो सेते सिंपल टर्म में पिला को बुझिया को ट्राई करी जदि तुम पाखरे के छोटो पिला नाही ताले यू जस्ट इमेजिन कि गोटे छोटो पिला को बुझो कंटेंट एनालिसिस कोन और रिसर्च कोन तो जो पार्ट रे तुमे जानि परियो कि गोटे पार्ट से कांसेप्ट रो ताको सिंपलीफाई तुमे टोटली करि पारु ना ता माने तुमे निजे से पार्ट ठीक से बुझिना so then you go back to the original source and try to understand in detail also that means if Feynman said ki when we how do we know ki we understand something when we can simplify something then only we know ki we understand it well okay? Always remember that good teachers are those who can simplify things so if you cannot simplify means you don't yourself understand it तो जोठी निजे जानि पारलो कि मु ई जिंसटा सिंपलीफाई कर पानी दैट मींस तुमे निजे ठीक से बुझिनो तुमे आउ थर से सही पार्ट को भलो से बुझियो ट्राई करो then once you are clearly understanding everything then mentally you try to explain it to a child if you can explain it to a child you can do it मु बहुत बेले मु पर्सनल एक्सपीरियंस रू कहूची केमिति आ मु रियलाइज करे बहुत सारा टॉपिक मो पई पढे इजी तो मो हला मते बेसी से भाबिया पड़े किछि किछि टॉपिक मते लागे कि यार एते डिफिकल्ट एटा केमिति एक्सप्लेन करी सो मु निजे मो माइंड रे से दिन सारा चलता है कि एटा को ए वे रे बुझेई सही वे रे बुझेई देन फाइनली आई हिट ऑन वन थिंग ओके ए कांसेप्ट थ्रू रे बुझे रे ए कांसेप्ट थ्रू रे बुझे रे बिलाने बुझ पारे so when I reach that point I know कि okay now I know that okay now I have actually understood this so you can use this mental imagery to understand things okay, to make things interesting yes sir thank you any other doubts सर गोटे रिक्वेस्ट अछि हम समस्त तरफ Mhm.
ସାର୍ ଆପଣ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଉ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପେପର ଟପିକ ଆମର ଟିକେ ପଢେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସକାଳେ ବି ହେଲେ ଚଳିବ, ପ୍ଲିଜ ଟିକେ ପଢେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି। Some people had also actually requested it, but problem is not that time ର problem। ଦେଖ ମୋର କଣ କି ପଢେଇବା ଟାଇମିଂ वाला problem ନାହିଁ, ମତେ ନିଜେ ନୋଟ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ଜିନିଷଟା ପ୍ରିପେୟାର ହବାକୁ ମତେ ଟିକେ ଇସ୍ୟୁ ହଉଛି, ବିକଜ ଏତେ ସାରା ମୋର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଅଛି ଅଲରେଡି ଆଣ୍ଡ ଜୁଲାଇ ମାସଟା ବହୁତ ହି ବିଜି ରହିବି। but still ठीक अच्छी। what I can do is कि I will consider one chapter, okay, so I'll ask Shreyan sir to keep that chapter till the end, okay। society and religion part टा मते पढ़ायार इच्छा थिला, so because बहुत नुआ नुआ जिनस मु तुमको कहि पारि, बहुत सारा कांसेप्ट अच्छी मो माइंड रे ऑलरेडी। पॉलिटिक्स भी नहीं पारि किछि, तू चाहू छी रिलीजन एंड सोसाइटी चैप्टर टा भलो आइडिया अछि मोर। so what I can do is कि I will request him and we will wait till August around रे मोर टाइम ही पारे, तो मु जिबा आगु सेटा को I'll try to take that class, okay। so meanwhile I'll get time to prepare notes। July month of July is really hectic for me, very hectic, so I'll definitely try, ओके सर। but I can't commit anything to you right now for the time being। this will be our last class। I will inform you towards the end of July whether I'll be able to take more class or not। if I can take it, is it will be better, no issues। and somehow ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ନା ରିସର୍ଚ୍ଚ ମେଥଡ ଟାଇପ ର ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଚାପ୍ଟର ପଢେଇଲି, actually sociology ପୁରା ଏଣ୍ଟାयर sociology ର ସବୁଠୁ relatively most boring chapters। ଯେତେବେଳେ interesting chapter ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବ। so let's see, if I'm able then I'll definitely try। any other doubts please ask। ଆଉ କିଛି doubt ଅଛି? सर आपण जो कॉन्सेप्ट कहले कि माने हाई प्रायोरिटी टास्क और हमारे बायोलॉजिकल टाइम, सर जदि सेटा को हमें जदि कंसीडर करबा तो बहुत कम समय ही माने मिलुची गोटे पढ़िबा को correct। या फिर पिक्चर्स देखिबा को, तो सेमिति जदि हमें करबा तो हम सिलेबस तो सरीबनी। no no you misunderstood me। so try to understand। I'm not saying कि you should only study during that time। तुम तो सेटा भूल बुझला। ମୁଁ କହୁଛି କି ତମ ହାଇଏଷ୍ଟ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଟାସ୍କ ଗୁଡାକୁ ସେଇ ଟାଇମରେ ରଖିବ, ଅନ୍ୟ ଟାଇମରେ ବି ତମକୁ ପଢିବାର ଅଛି। ତୁମର ଯଦି ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରାଇମ ଟାଇମ ଦିନରେ ହାର୍ଡଲି 2-3 ଘଣ୍ଟା ଆସୁଛି, ତାମାନେ କଣ 2 ଘଣ୍ଟା ହିଁ ପଢିବ? ମୁଁ କହୁଛି ସେଇ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ କୁ ପଢ, ଅନ୍ୟ ଟାଇମରେ ଯାହା ପଢୁଛ ସେଟା ରିଲେଟିଭଲି ଲେସ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ ପଢ। that was my point। my point is not कि you will only study 1 hour 2 hours। my point is कि start treating different time of the day different। how it this is also true कि biological prime time और जेतले हमर हाईएस्ट एनर्जी अटेंशन थिबो से ड्यूरेशन टा बहुत कम टाइम था, दिन रे हार्डली 3 घंटा 4 घंटा अछि। दैट मींस कि दैट इज दैट मच इंपोर्टेंट कि ताको तुम सेई पूरा रिलीजियसली ताको डिफेंड करो, सेई टाइम ताको सेई टाइम रे तुम टोटली डिस्टर्ब जेमते होबो नाही। when you understand this concept you will see कि you will force yourself to sit during that time। तुम जमा भी निजर निजको माने फालतू काम से टाइम रे अलाउ करिवो ही नाही। ଆମର ଆମେ ଯେହେତु ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହିଁ କରିପାରୁ ନାହିଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟାଇମ ବୋଲି, ଆମେ ବହୁତ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରୁ। ଏବେ ୟାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବି ଏଇଆ କି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ କାମ ଗୋଟେ ସାଇଡ ଏରାଣ୍ଡ ରେ ଆମେ ଚାଲି ଯାଉ କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ, और ମାଇଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯାଏ, କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଲ୍ କରିଦଉ, କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡ ଟା ଟିକେ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଯାଏ, ସେଇ ଡାଇଭର୍ସନ ଟା ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଚାଲେ। so this is also one way to stop that because you will say कि नहीं this ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ ଟାଇମ, ଏଇ ଟାଇମ ରେ ମୁଁ କେବଳ ଫୋକସ କରି ମୋ କାମରେ। so you will not waste any time। for example say related ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ମତେ ଆସିଲା, ଗୋଟେ distraction sheet ବୋଲି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢୁଛ ସେତେବେଳେ କଣ କରିବ କି ତମ ଫୋନ କୁ ଟିକେ ଦୂରରେ କି ଅନ୍ୟ ରୁମ ରେ ରଖିଦବ ସାଇଲେଣ୍ଟ କରିକି, ବଟ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କ ସିଟ୍ ଅର ଡାଇରୀ ରଖିବ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏଇଆ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଠ ପଢୁ ହଠାତ୍ କିଛି ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଗଲା और ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିଗଲା କି ଆରେ ମତେ ସେଇ କାମକୁ କରିବାର ଥିଲା, ଏଇ କାମ କରିବାର ଥିଲା। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା କି ତୁମେ ଯଦି ଇମିଡିଏଟଲି ସେ କଲ୍ କୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ और ସେଇ କାମଟା କରିବାରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ କାମ କରିବାରେ ଲାଗିଯିବ, ଲେଟ୍ସ ସେ କି ତୁମକୁ ମନେ ପଡିଲା କି ମତେ ଗୋଟେ ट्रिप ପାଇଁ ଗୋଟେ କଣ ବୁକିଂ କରିବାର ଥିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ଟାଇମରେ ବସି ବୁକ୍ କଲ ସେଇ ତୁମର ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରାଇମ ଟାଇମରେ। ଏବେ 5 ମିନିଟର ଜିନିଷ ସେ 15 ମିନିଟ ଅଧଘଣ୍ଟେ ହେଇପାରେ। 5 ମିନିଟ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି ଫୋନ ରଖିଦେଲା ପରେ ବି ତା କଥା ମେ ବି ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟାଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଥାଇପାରେ। तो रादर यू राइट इट डाउन ऑन द डिस्ट्रैक्शन शीट कि मते एई काम करियार अछि, एई कॉल अटेंड करियार अछि, जहाँ भी माइंड रे आसुची इमीडिएटली, बट डोंट डू इट इमीडिएटली, पुट इट असाइड। एक्चुअली हमें हम भीतर एंजाइटी गोटे जिंस होय कि हमें इमीडिएटली नोट डाउन न कले हम जिंसटा भूली जु, सेतपय हम चाहू कि इमीडिएटली कर दो।
बट से जो जिनसा इमिडिएटली करू बहुत टाइम वेस्ट हो जाए तो डिस्ट्राक्शन सीट गोटे मेंटेन कले कौन हम तो माइंड बुझेदेल कि ठीक अच्छे ये कमटा मुझे कर लिखिक रखी देखिए कमटा कर बट फॉर द टाइम बिंग लेट मी फोकस ऑन माय टाइम बिकॉज दिस टाइम इज प्रेशियस ये जो टाइम ये टाइम पे टोटली हमको डाइवर्ट होबार ना तो या द्वारा यहाँ कले कौन प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो आमर एथि हुए ना बिकॉज आम आम दिन सब टाइम को इक्वाली ट्रीट करूँ आम सब तुम देखी पे जो शेड्यूल निज बनाती 8 ରୁ 10 8 to 10 am 10:30 to 1 p.m. इवनिंग रे सेमती 9 to 11:30 p.m. practically such kind of very large amount of time study करिया possible नहीं बट से भावती कि जदि ठीक अच्छे मुझे 6टा बेले मूवी देखा जी कि 9टा बेले मूवी देखा जी जब ठीक अच्छे बिकज मुझे टाइम मेकअप करदी बट दैट इज ए रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग तुम तुम प्राइम टाइम रे जदि टाइम वेस्ट करुच से घंटाटे दैट इज इक्विवेलेंट टू 2-3 hours of other time so when you understand this concept then you will start treating different time period of the day differently and you will put more premium on that time period in which you are better prepared to learn and that will increase your productivity. Any other doubts? सर बेले बेले एमती लेक्चर्स देखु देखु माने जना पड़ेनि सोई पड़े तो सेगुड़ाक लेक्चर्स भी इम्पोर्टाट बट से टाइम रे एमती अनकंट्रोलेबल हिसाब से हुए माने सेटा मु जानि पानी एमती करबी सेटा कौन देखि आइदर देखु सोई पड़े से क्लास वगैरह इधर देखु देखु बेले बेले सोई पड़े माने मु बुझी क्लास पारेनि एटा recording मोर हां से गुड़ाक that's the person specific problem तार कौन solution I don't know so हे पारे कि मे बी either you might be tired or तुम से इम्पोर्टेंस से टाइम रे दे पारना ठीक है जो टाइम जदि से क्लास रे इम्पोर्टेंट अच्छी सेटा तुमरो बेटर टाइम जतले तुम एनर्जी लेवल बेसी अच्छी से टाइम रे देखो in general there is a difference between online class and offline class in the sense कि online class भी से सब पिला कहे कि लाइव क्लास अटेंड कर देखो एबे तुम फेस टू फेस आमर इंटरेक्शन होची गोटे लाइव चलची जिंस एबे जो अटेंशन लेवल रहइबो ए अटेंशन लेवल केबे रिकॉर्डिंग क्लास देखियार रहइबो ऑलवेज ट्राई टू अटेंड फर्स्ट जदि ऑफलाइन होची भलो जदि फॉर सम रीजन ऑफलाइन क्लास हे पारु नाही try to attend live classes because attention level will remain high okay. So this is also model एबे हमर साइकोलॉजिकल इश्यूज अछि मु तक बहुत बेसी एक्सप्लेन करे चाहूँ ड्यू टू साइकोलॉजिकल रीजंस हमें डिस्टर्ब ही जाऊ रिकॉर्डिंग तो तुम जत जानिबा ना कि गोटे जिंस को परे भी कर पारी रिकॉर्डिंग टाको तो परे भी देखि पारी सताळे सब रिलैक्स हे जो तो माइंड फोकस करियो नहीं किंतु जताळे तुम निजो फोर्स करियो कि नहीं मु लाइव क्लास रे बसबी एबे कंटीन्यूअसली देखि सताळे बेटर रहिबो ह्यूमन साइकोलॉजी एटा सता बेसी करियो to try to understand the nature of study itself studying रो जते सारा फेनोमेना अछि ना तारो नेचर विषय रे बुझी बेटर बुझी पारियो सेते बेटर इंटरवेंशन निजे तुमे डेवलप कर पारियो निजे बेटर से एक्शन नहीं पारियो प्रॉब्लम होची कि बहुत पिला बुझी पारंती नेचर ऑफ स्टडीइंग कोन सो टिके मेटा एनालिसिस दरकार अछि सब जतले सोइबा आगु हम कहूची सोइबा आगु गोटे काम करियो सोइ देखो पढिबाटा होची कंटेंट पढ़ा विषय रे बुझाटा हूँ मेटा कंटेंट और मेटा एनालिसिस जेमिति कि स्ट्रैटेजी वीडियो देखिया निमोनिक्स वाला वीडियो देखिया को गोटे टॉपर रो इंटरव्यू देखिया जहाँ थ्रू तार एक्सपीरियंस हो दीज आर द मेटा थिंग तो सबुदिन किछि किछि समय स्पेसिफिकली सोया आगु टिके अल्प किछि समय जतले बहुत बेसी अटेंशन या पई दरकार नै किछि किछि समय ए सब जिंस रे स्पेंड करो सो दैट तुमरो टूल गुडा शार्पन हो टूल गुडा शार्पन इन द सेंस कि दिस इज आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड ऑलवेज स्टडी टेक्स्ट और समथिंग किछि टूल भी हमर विषय रे स्टडीिंग टूल गोटा शार्प हो सो दैट केमितिया पढिबो केमितिया बेटर वे रे मन रखि परिबो बेटर वे रे प्रोडक्टिव ही परिबो बेटर वे रे आंसर कर परिबो ए सब जिंस यार तरीका गोटा शिखिचो तो डेली किछि किछि छोटो छोटो वीडियो देख पारो लोकंकर एक्सपीरियंस विषय रे पढि पारो ओवरऑल आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम या द्वारा कोन हो नेचर ऑफ स्टडीिंग विषय रे मोर बहुत आईडिया आछो नेचर ऑफ स्टडीिंग और नेचर ऑफ प्रिपरेशन विषय रे आईडिया आसले कोन हो तो बेटर वे रे प्रिपेयर ही परिबो नोविस काइंड ऑफ मिस्टेक करिवो ना ठीक है so I think that's it and we have also reached our time so thank you for your patience and in case this is my last class I just want to say that all of you have been wonderfully patient
most other faculties usually take 1.5 hour classes. So I usually take 2.5 hour or even more than that. So I know it is a bit taxing on you, but I'm very happy that still many of you came to the class, attended it live, interacted with me. So I really appreciate your enthusiasm. And mate moro सर गोटे क्वेश्चन पचार सर निज माने पेशेंस केमिति डेवलप करू माने प्रिपरेशन जर्नी रे बेले बेले लागुଛି कि एते सब अछि जल्दी सब कर देबी एटा करबी सेटा करबी किंतु सेई बेले लाडू माने काम भी होनी पेशेंस हो जाଉଛି तो सेटा केमिति डेवलप करू it's a question that requires a longer answer. So right now I don't want to go into it. Maybe personally after the class you text me, I will tell you a few things. In general भी एमितिया नहीं कि मु सब दिन ପାଇଁ class ଛାଡିକି ଯାଉଛି तो I'm still part of SOURAV sociology. I'll still be in the group. I'll see your text. जहाँ किसी doubt भी हो, you can ask me, you can tag me in the group also. No issues. So we'll be in touch. No issues about that. आओ जहाँ भी तुम्हारा doubt हो, clarify it. And if possible, I'll also take further classes. But in case I am unable to take and this is my last class, I just want to thank all of you. बहुत ही भल लगे मत मुझे एक्चुअली स्टार्टिंग भावनी एत सारा क्लास नेबी बोली ईच चैप्टर पे जी क्लास नवार एक्चुअली मुझे अधिका क्लास नहीं सेकंड चैप्टर पे दुईटा कि तीन क्लास फर्स्ट रिक्वेस्ट करी बट एक्चुअली से चार्टा क्लास सो मत भल भी लगे एक्सप्लेन करू हो जाए 2.5 घंटा 2 घंटा मिनिमम तो 2 घंटा प्राय क्लासेस मुझे So we have spent enough time on whichever chapters I have taught you. So I hope that those things will come to your help and you will be better able to answer it. So thank you all guys. And if you want to say anything to me also right now, you can say. You still have 5 minutes and then we will wrap it up. Jadi kichi कहयार अछि, you can ask me. Okay. Technical question no. This is normal kichi जदि कहयार चाहूछ. Okay. And then we will wrap up today's class. सर लास्ट वर्ड तो यूज करंतुनी आपण प्लीज सर जेबे भी आपण को टाइम मिलियो सर प्लीज हम मन के सहित इंटरेक्ट करू हाँ गला पर सर जेबे मने Okay. पड़िबो सर प्लीज इंटरेक्ट करिवे हम मन को सहित एग्जाम पूर्व तो लागु कि आपण को मोटिवेशन बहुत नीड पड़िबो सर ना एग्जाम एग्जाम आगरो तो मु स्पेशल क्लासेस नहीं सेटा नहीं माने मु क्लासेस कथा कहती जो टॉपिक वाला क्लास एग्जाम पूर्वरु I'll take special classes, don't worry. मोटिवेशनल क्लास जो दरकार अछि गोटे सेशन नहीं जिबा एग्जाम आगरो सब बेले एग्जाम आगरो पिला कर बहुत टेंशन मोटिवेटेड मोटिवेशन डाउन हे गला डर लागछि टेंशन लागछि एंजाइटी होछि सो डिस्कस दैट सो ठीक है आई विल नॉट यूज लास्ट वर्ड but yes any issue that you will have I'm always here for you एमितिया माने एटा भी नुह कि केवल ए कोर्स रो ड्यूरेशन और समथिंग even after finishing of this course also in life in general also if you have any issues or if you want to communicate ever to me I'm always open. I have many students who from 2022 time onwards they are still in touch with me and माने बहुत ही भलो कांटेक्ट रुहंती किछि इशू हले मु तांको हेल्प कर किछि दे एडवाइस दरकार है so I'll always there for you. It is not a commercial kind of relation. Okay, इंटा नहीं कि कोर्स सरियला रिलेशन सरियला. So if you stay in touch and if you remain concerned, then I will also be in touch. So this contact will remain. Don't worry. Sir, your ठीक patience and dedication towards us मतलब एते अपना patience को हमको पूरा निजर फुल डेडिकेशन सहित पढ़ी और पर्सनल हो किंबा हम पाठ पढ़ारे जहाँ भी प्रोब्लेम अच्छी सब सब सॉल्व करने को निज तरफ 100% एफर्ट देते सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you very much. I've tried my best. So and तुम मैंने भी बहुत patiently सुनी जो so ସେଥିପାଇଁ भी I mean you should also congratulate yourself because এই टॉपिक गुडा बहुत डिफिकल्ट टॉपिक थला तापर भी हम एते टाइम धरी सांगरे डिस्कस कलु एंड जिनसटा बुझिलु so that itself is really great. तो ठीक है सर आपण बहुत सिंपलीफाई कर देथिले जो ପାଇଁ कि माने 2 घंटा 2.5 घंटा जणा पड़लानी क्लास जे हां Thank एते लंबा चलछ नॉर्मली तो हम 2 घंटा रे भी पूरा एडजस्ट हो जाए. you. Maybe so thank you very much. That's also another way of seeing it.
Okay, that's good if teacher can Sir. make things engaging. Hello. Sir, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗେ କି Sir, ଆପଣଙ୍କ mostly starting ରୁ start ହେଇଥାଏ ନା end ତକ ସେ ପେଜ ପୁରା ମେଣ୍ଟେନ ରହେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ସେଇଟା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗେ ସାର୍ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ Thank ବଡ you. ଯେମିତି ଆପଣ Thank you. ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ରେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋ କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ପୁରା ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋ। Yes, flow should be there in answer writing as well as in life in itself. Yes, Sonalika Biswal, you were saying something. Sorry, you got interrupted. sir ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ତ ଶ୍ରେୟାଂଶ sir ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କ୍ରିଏଟ କଲେ through that ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମାନେ interact କରିବା ପାଇଁ ମାନେ କଣ ଚାନ୍ସ ପାଇଲୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ନିଜକୁ ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ ରିଲାକ୍ସ Are ଫିଲ୍ nice. କରୁଛୁ sir। Okay, ଆଉ relaxed. Okay. ନାଇଁ sir ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ୱେ ଅଫ ଆପ୍ରୋଚ ଟା ଗୋଟେ ବାରକୋଡ କ୍ରିଏଟ କରିଦେଲା କି କୋଉ ୱେ ରେ ପଢିବା କଥା କେମିତି ମାନେ କୋଉ ୱେ ରେ ଜାଣିବା ଯେ କଥା ମାନେ ଡେପ୍ଥଲି କେମିତି ଜିନିଷଟାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରାଯିବ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆଉ ଆଜିକା ଡେଟରେ ବି ସାର୍ ଆମେ ଯୋଉ ବି ମାନେ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟିଠୁ ପଢୁଛୁ ମାନେ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଖୋଜୁଛୁ କି ସୌରଭ ସାର୍ ଯେମିତି ପଢଉଛନ୍ତି ସେଇ ଟାଇପ ର ଆମକୁ ନୋଟ ଦରକାର ଆଉ ସେଇ ଟାଇପ ର ଆମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ଲାରିଫାଇ ଦରକାର ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ ୱେ ରେ ମାନେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ସିରିୟସଲି ମାନେ ମୁଁ ତ ଗଲା ଥର ଲାଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ରେ ଏଇ ଚାପ୍ଟର ପୁରା ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇଥିଲି ସାର୍ ମାନେ ଟୋଟାଲି ମୁଁ କିଛି ବୁଝି ପାରିଲିନି କିଛି ନାହିଁ ପୁରା ଛାଡି ଦେଇଥିଲି। Because बहुत ही technical ना, बहुत technical, बहुत ही relatively boring chapter. कहती starting में कि मैंने most boring chapters in entire sociology, but once you understand it, then you can write answer. Understanding basis पे हो. So ଆଜ୍ଞା thank you ସାର୍ for this. या बहुत ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଭଲ ସାର୍ ଲାଗିଲା ବହୁତ ଶୁଣିକି. ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ବହୁତ Thank ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମକୁ ମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମାନେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ମାନେ ଡେଡିକେସନ ୱାଇଜ ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ମାନେ ଆଜ ଏ ମାନେ କଣ କୁହାଯାଏ ସିମ୍ବଲ ଅଫ ହ୍ୟୁମାନିଟି ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ସେଇଟା ହେଲା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍। ମତେ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ବେଶୀ ପ୍ରେଜ ହେଇଗଲା ଏବେ. ନାଇଁ ନାଇଁ I ସାର୍ don't know if ବେଶୀ I ନାହିଁ deserve ଆମେ it. ଆପଣ ସାର୍ ଡିଜର୍ଭ ଏତେ କରନ୍ତି ଦିନ ହେଲା ସାର୍ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ସାର୍ ଆମେ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲୁ ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଟା କହୁଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ 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 ତ ମତେ ବି ଫିଲ୍ ହେଲା କି ହଁ କିଛି ଗୋଟେ କହିବା କଥା ତ ହେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ସାର୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ହେଲି। Okay, thank you, Sonalika. Very, very nice of you. ଥ୍ୟାଙ୍କ Yes, ସାର୍ ୟୁ Madhu. ସୋନାଲିକାଙ୍କ ପଏଣ୍ଟ କୁ ଆଡ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଆମେ ଶ୍ରେୟାଂଶ ସାର୍ ଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହୁଥାଉ ହଁ ଏ ମ୍ୟାମ କି ସାର୍ ନୋଟ୍ସ ଦେଲେନି କଣ କଣ ଦେଲେନି କି ଏଇଟା କମ ରହିଗଲା ଏ କରିଗଲା ତ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ କୁ ମାନେ ଆମେ ଏମିତି ଅନେଇ ଦଉ ସାର୍ ସବୁ ଦେବେ ଏ କରିବେ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଅଛି ତ ଆଉ କିଛି ବାହାରୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବନି ଏ କରିବନି। ଆମେ actually ବହୁତ ହି depth ରେ ପଢୁଛୁ each and every topic. Even UPSC level ରେ ବି ଯେତିକି ଦରକାର ତାଠାରୁ ଆଉ ଟିକେ depth ରେ ମୁଁ ପଢିଛି because my concern is ସାର୍ that ଆଉ ଗୋଟେ ମଜା କଥା ହଁ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବେ ଶ୍ରେୟାଂଶ ସାର୍ ଆସିଲେ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିପାରିବୁ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରେୟାଂଶ ମାନେ ସୌରଭ ସାର୍ କେମିତି ମାନେ ନୋଟ ଗୁଡାକ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ଅନ୍ୟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆମକୁ ସେମିତି ନୋଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରି ଆପଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସେଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା। ବହୁତ ପ୍ରେସର ପଡିବ ଅନ୍ୟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟିଙ୍କ ଉପରେ ମୋ ପାଇଁ ତାହେଲେ but ଠିକ ଅଛି it's good it's ନାଇଁ not ସାର୍ point is ki ସିରିୟସଲି କୋରିଆଲି you ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। yes you can also pressurize faculties no issues and you should also ଯଦି ସେତିକି depth ରେ ସେମାନେ faculty ମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି then you have every right to push the faculty to give their best and faculties ମାନେ କେବେ ମନା ବି କରିବେନି if you want ki something should be better note better ho explanation better if you give them the correct feedback they will work on it. So I'm happy that I have been able to set a standard as you say. Let's see. Yes, Chakradhar, you want to say something? Chakradhar, Sir, sir, thank you, sir. Sir, we have no substitute of your learning process. thank you, Chakradhar. Chakradhar usually asks a lot of questions. GS class रे बहुत question पचारଥିଲା. Sociology classes रे basic question पचारନଥିଲା. तो चुपचाप पढ़ुଥିଲା ଖାଲି socially ଶୁଣୁଥିଲା ଖାଲି. ଆଜ୍ଞା sir ଟିକେ ସେଟା ଟିକେ କିଛି Chakradhar has also pushed me into going into depth in many topics, है ना? So many simple statements I had to analyze and I had to go into depth because Chakradhar asked me, "काहे की inside it?" So I had to go into depth also. It's good. Always it's good to affirm your first principles and try to understand why something is true because you think it is true, है ना? तारा evidence कौन? So for that reason also, and teaching learning process always it is a two-way process. ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ପଢାଏ ତମମାନେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କର ଇମିଡିଏଟଲି ମୁଁ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ
इमिडिएटली आंसर माइंड रे आसनी टिके भाबी कि तापर कोए बेले बेले टोटली यदि न आसे तापर मु पर हेडा भाबी कोन तार आंसर ही करे तो ता थ्रू रे मते बहुत जिंस शिखिया को मिले सेकेंडली जति के डेप्थ रे तुमे आमे निजे पढिली जिंस को बुझू अन्य कहा को बुझेले ता थारु बहुत बेसी डेप्थ रे जोर पड़ियो so अन्य को कहा को and remember this if you after maybe some attempts if you want to go into the teaching line also it is I will also say yes you can for experience or even as a career you can also choose it but the point is it will also help you in exam preparation also because जते डेप्थ रे तुमे अन्य को पढ़ाया को प्रिपेयर हबो सेते जिंसटा सेते बेसी कंसोलिडेट ही जे एंड सेते भलो वे रे बुझ पारे बहुत सारे जिंस तो माइंड रे आसी कि एई एटा को मु एमिते वे रे एक्सप्लेन करले यार फर्दर क्वेश्चन एई बळे आसी तो व्हाट एम आई गोइंग टू से यार आंसर कोन ही पारे so this will develop your own understanding also मो केस रे भी सेटा हला बहुत डेप्थ रे मु पढिली सोशियोलॉजी को मु आगुरु केवल गोटे स्टोरी भलिया बहुत सारा जिंस पढितली बिकॉज़ आई एम interested in a lot of things so I read in general also so ताकू मु सेमतिया स्टोरी हिसाब रे पढितली बट जेतला मते पढिया को हला so I had to systematically study a lot so it has helped it has enriched my own knowledge also या आगुरु एंथ्रोपोलॉजी पढितली फिलोसफी पढितली साइकोलॉजी तो मोर निजर चैप्टर्स माने सब्जेक्ट सेटा तो बहुत डेप्थ रे पढिची तो एबे सोशियोलॉजी को बहुत डेप्थ रे मते मु पढिली मते भल लागे and yes this is also one of my suggestion to you mo agaru कहitili broaden your horizon as much as possible जते माने कोन प्रिपरेशन ताकू तुमे बहुत ही बेसी नारो पिजन होल्ड वे रे देखो ना तुम जते ब्रॉड जिनसटा को देखियो ना सेते बैकग्राउंड रे जते नॉलेज डेवलप हो तारो इंपैक्ट पड़ियो तुम आंसर राइटिंग ओके so whenever you are getting time see I'm not saying that you should read other optionals during your biological prime time but ଯେତେବେଳେ फ्री ରହୁଛ ଯେତେବେଳେ ସପୋଜ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରିପାରୁଛ ସେଇ ଟାଇମରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ସବଜେକ୍ଟ କେବଳ ଗପ ଭଳିଆ ବି ପଢ ସାଇକୋଲୋଜି ଟିକେ ଟିକେ ପଢ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ସାଇକୋଲୋଜିର ବହି ସବୁ ପଢ ଲିଟରେଚର ପଢ କିଛି ବୁକ୍ ଯୋଉଟା ପ୍ରିପାରେସନ ଏମିତି ହେଲ୍ପ କରିବ ଅବଦୁଲ କାଲାମଙ୍କର ବୁକ୍ ଅମର୍ତ୍ୟ ସେନଙ୍କର ବୁକ୍ ଜିନ୍ ଡ୍ରେଜିଙ୍କର ବୁକ୍ ତ ଏଇ ସବୁ ବହି କିଛି କିଛି ପଢ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କର ବୁକ୍ ସଞ୍ଜୀବ ସାନ୍ୟାଲ୍ସ ବୁକ୍ read these books so they will also enrich your knowledge. I'll show you my library by the way since I don't know when next we will meet to see my library. I'll show you some things. This is by the way this I'm using this as a ମାନେ ଏଟା को मोर मोर डेरा करिକି ରଖିବାକୁ iPad ଟା यूज करथली this is my library तो ए सब बही अछि देखो जति कि बही माने टेक्स्ट बुक एगुडा किछि भी न एगुडा सब स्टोरी बुक एटा गोटा लाइन देखुछ ता पछरे आ गोटा रो एंटायर रो अछि हला ईच एंड एवरी लाइन पछरे आ गोटा रो बिकॉज़ मो पाखे एति कि जागा भी नहीं बही रखियो ओके दिस इज द एंटायर थिंग you see behind each and every shelf there are more books you see behind this there are more books ता पछरे पछरे और बुक अछि so because मो पाखे एति जागा नहीं एति बही अछि एति जागा नहीं तो एटा गोटे जिंस मते बहुत हेल्प करथला तो सेपियंस होमो डेज हिस्ट्री ऑफ इंडिया हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड ता ऊपर जति बुक एटा मु सिग्न देखौतली कि जो इंट्रोड्यूसिंग सीरीज स्टार बुक गुडा so these are see books will never you will never have any substitute to books you as much as you can study it will enrich your understanding it will enrich your answers also in general also not because of writing any answer in general to have a broader view of life it is essential that you read as much as possible okay? So that is my message to you and frankly we have exceeded time limit so much so thank you very much and I mean I'm very grateful to you also for being so patient and that's it guys so this is the end of the class okay we'll be Thank in you so touch much, sir. take care god bless Thank you so much, sir. very much. thank you